Good afternoon. Good afternoon, everyone. And when I say good afternoon, it is both for people who are sitting here in the offline mode as well as people who are in the online mode. So the online mode should not think that the greetings are not for them. It is for everyone. So complete democratic means through which we begin. So yesterday I just tried to give you a glimpse of what all we are going to study in our paper and what is the means through which we'll be studying, the mode of our study. यानी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर हमने एक छोटी सी आपसे चर्चा की थी कल. और from today onwards we begin our syllabus, and as I told you when I ended my class that I'll be starting with Western political thought. So that is where we begin our entire discussion. So first I'll actually focus on political philosophy section, both Western and Indian, and once I've done that, then I'll come to the theory section, and then we'll take all those theory one by one, which are very crucial building blocks of our understanding of the concept. So if you have understood the first part precisely, if you would just work a bit on the first part, so if you have a problem, you can raise doubts, you can raise questions, but I would like you to focus mostly in the first part of the syllabus, which is paper 1 part A. Because that is where you will get the concept, and you will find that the whole of political science is nothing but an application of what you have learned in the first part. Okay, so if you can understand it well, you can understand anything in political science, because after that everything is very very easy in political science. तो जो सबसे मुश्किल सेक्शन है वो पार्ट 1 का, पेपर 1 का पार्ट ए है. और अगर आपने पेपर 1 का पार्ट ए आसानी से समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि पूरा पॉलिटिकल साइंस इसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उसी एप्लीकेशन को बार बार पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे. ठीक. सो एज आई सेड दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट विथ प्लेटो फर्स्ट, बिकॉज प्लेटो बीइंग अ वेरी prominent thinker in our tradition. Yeah. So for that section, I have already told you that you will refer to our class notes, okay, plus the study material you have. That's the first thing. For political philosophy, if you want, you can refer to a book by Subrat Mukherjee and Sushila Ramaswamy, but this will not make much sense to you. But even if you want, you can take this book. The book is titled Western Political Thought from Plato to Marx. Okay. So I will not be referring entirely to this book, because I'll refer to other very significant text which deals with political philosophy. But as I told you that there's no need for you to go back and refer to those books, because those books are actually found in the libraries, and those are not general textbooks. Those are very researched books by very distinguished authors who have invested lots of time in writing and making the frameworks of different thinkers for the book. So we don't have to go through their entirety of the discussion, but we only have to focus on the essential concepts of the thinkers. But for that you have to rely on the very authentic sources. Okay. Therefore I said that there's no need for you to go back and again try to dig up all these books and then start readings. Yeah, but for a simplistic reading, if you want, you can read this particular book. Okay. Even for comparative politics, there is a Indian author, एकदम देसी किताब है, J.C. Johari, CGP. Not the entirety of the discussion, but those portions which you feel are overlapping with the syllabus that you are looking at, वो portions आप इससे पढ़ सकते हैं. Because he is an Indian author, so he's also tried to write it in a very simplistic manner, which will actually make sense to you. But as I have already told you that sometimes you will find that these books have some contradictory statements made, and therefore when you start reading them, you start building more confusion. So for CGP, I always say that rely on the class notes and the discussion that we have.
and the study material that we give you. Okay, so we'll have a very thorough discussion. So it will not be as if that you will not understand anything that is written over there. And the best way to check whether the thing that you have already read, is it sufficient for you or not? So the proof of the pudding is in the eating. कहते हैं. So how do you take the proof of the pudding? By referring to the previous year's questions from those very topics and see that are you able to write those questions with the level of the understanding that you have through the class lectures and class notes. Okay, because see, the book is not designed for your exam. The book is designed for some other purpose. You have to read the book, which I told you yesterday, I'm again repeating myself, to get a fair idea about the language of the subject. So if you do a good reading, it will enhance your comprehension as well as language that is related to the subject. You'll be able to express yourself in a more lucid manner. आपकी जो अभिव्यक्ति है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको विषय की भाषा समझ में आने लगेगी. किताब पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास बहुत कुछ पढ़ने को होता है, तो इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा टीचर्स के मटेरियल पर रिलाई ज्यादा कीजिए, है ना. और अगर आपके पास समय है तो कुछ टॉपिक्स जो आपको थोड़े गैप्स लग रहे हो नोट से, उनके लिए आप एक बार किताब का सहारा लीजिए. लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपके क्लासरूम के डिस्कशन या मटेरियल के डिस्कशन का वो पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब ये चीजें फ्रेम की गई हैं तो वो इन किताबों को पढ़कर ही की गई हैं. दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू. So focus on that part precisely. But you should read books. Books reading is a very good habit and you should do it as well. इसमें एक और किताब मैंने कहा था सीजीपी के लिए, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है. सीजीपी के बहुत सारे सेक्शंस वहां भी ओवरलैप करके आपको मिलेंगे, जो एंड्रू हेवुड की बड़ी स्टैंडर्ड किताब है. स्टूडेंट्स खासतौर पे ग्रेजुएशन जो करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इट्स अ वेरी एसेंशियल रेफरेंस बुक. तो ये किताबें आपके लिए काफी. नहीं पढ़ सकते तो क्लास पर रिलाई करें, क्लास नोट्स पर रिलाई करें. नो, आई हैव नॉट सेड अबाउट डीडी बसु. हाँ, पर मैंने नहीं किया, है ना. वो आप पॉलिटी में पढ़े, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. जब आप हमारे साथ इसमें पढ़ रहे हैं, जब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पॉलिटी में ऑलरेडी उसको पढ़ कर आते हैं. यू रीड लक्ष्मीकांत, यू रीड डीडी बसु, दैट्स मोर देन इनफ. हालांकि यू नो व्हेन आई विल बी डूइंग दैट पार्ट, so I'll be referring to some other sources as well, not exactly the source that you are referring to. So my source will largely be Granville Austin. Okay, so I will follow Austin, because you have to understand all these things not by means of verifying and understanding the articles of the Constitution. You have to understand the analysis of all these different sections of the Constitution. So that's why these books like Rekha Saxena, MP Singh, or a book like Granville Austin, दो किताबें उनकी है, बड़ी मशहूर किताबें हैं, आप सब जानते भी होंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, एंड वर्किंग अ डेमोक्रेसी. सो आई हैव एक्चुअली रिलाइड सो मच ऑन बिल्डिंग माय मटेरियल आल्सो विद दीज सोर्सेस. सो दैट विल एक्चुअली बी पार्ट ऑफ आवर रीडिंग एज वेल. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट नेम इट, बिकॉज इफ यू टेक दैट बुक, यू विल रीड द होल बुक. मोटी किताब है, आपको बहुत मदद नहीं करेगा एग्जाम की तैयारी में. आप जब प्रिपरेशन करने आए ना, तो आप वो आउटलुक मत रखिए कि आपको इस विषय का एक विशेषज्ञ बनना है जो इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि वो अपनी एक पीएचडी की थीसिस लिख सकता है. आप उस चीज को छोड़ कर आए. आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि जो टॉपिक है उस पर अगर कोई सवाल पूछा गया तो क्या आप उसका आंसर लिख सकते हैं 150 वर्ड में, 200 वर्ड में या 250 वर्ड में. ठीक है, ये अप्रोच आपका है. तो ये कम शब्दों में आप तब लिख सकते हैं जब आपको उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कमजोर है तो आप कम शब्दों में कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे. आपने देखा होगा, इफ यू वुड राइटिंग द इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, व्हेन यू डोंट नो द आंसर, यू राइट 7-8 पेजेस. जब नहीं पता होता है तो, है ना. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, फर्स्ट एग्जामिनेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, इसके विभिन्न आयामों की चर्चा करें, डिस्कस डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स. पहला सवाल हर किसी को पता है, एवरीबॉडी नोज इट. और आप लिखते क्या है, नोबडी रीड्स इट. तो उसके बाद उनको जो समझ में आता है, उन्होंने जितनी फिल्में देखी, उन्होंने राजनीति फिल्म देख ली रात में, उन्होंने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है. एंड दे राइट द कंप्लीट स्टोरी, थिंकिंग कि टीचर तो कभी कॉपी चेक करेगा नहीं, वो तो हमारे 10 पेज को देख करके खुशी खुशी. तो जब आपको नहीं पता होता है तो आप बहुत ज्यादा लिखते हैं.
तो इसलिए यूपीएससी को यही चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा पता हो ताकि आप कम शब्दों में अपनी बातें लिखें। एडिटोरियल पढ़ना इसलिए जरूरी है, एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं तो आपको लिखना आता है, क्योंकि आपने अभी तक लिखा तो है नहीं, तो लिखना सीखना भी तो आना चाहिए ना। आप देखिए वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कितनी बातें कितने कम शब्दों में कहते हैं, क्योंकि पेपर के पास तो बहुत गिना चुना स्पेस होता है। सो दे हैव टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन लिमिटेड वर्ड्स। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज आस्क आवर स्टूडेंट्स दैट यू शुड फॉलो न्यूज़पेपर्स डेली, go through it, because newspaper will enhance your expression. This will make you a better learner of the language and then you'll be able to express better. ठीक, ये करना है आपको. So rely on the lectures that I am giving, और अगर कुछ इसमें मुझे supplement करना होगा ना तो I will myself provide you that supplement. जिस भी सोर्स से मुझे जरूरत लगेगी तो I will myself give you, you will get a PDF for that. तो don't worry for materials. अभी सबसे ज्यादा क्वेरी जो है मटेरियल को लेकर के है, ये सबसे पीछे होना चाहिए कंसर्न. अभी मैंने आपको पहले ही कल कहा that when you start reading the subject, your focus should be more on learning the subject. Instead of from day one you think that you have to crack the examination by this subject. It is very surprising that engineers who take up these kind of social science options, they score more than 300 marks. And people who have done social science, they score 250 or 240. उनके बड़े ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं. अचंभे की बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली स्पीकिंग, बट दिस इज अ रियलिटी. व्हाई? बिकॉज इंजीनियर्स डोंट फोकस देयर माइंड ऑन ऑल दोस क्वेरीज दैट कीप emerging in the minds of people who have already done social science and they have a bit of understanding over it. वो क्या करते हैं, वो जैसे इंजीनियरिंग किया उन्होंने, रात में पढ़े सुबह एग्जाम पास किया 4 साल, और उसके बाद जब मार्केट में गए तो पता चला कि कोई स्किल ही नहीं है उनके पास. इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए होता है, लेकिन उन्होंने ना रात में सुबह पास करके एग्जाम पढ़ते पढ़ते एक्सपर्ट बन गए कि कितनी चीजों को कितनी बारीकी से समझ के उसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि लगे कि एग्जामिनर को हमें सब पता है. ये आपको भी सीखना है. यू हैव टू मास्टर इट, बट यू विल ओनली मास्टर इट व्हेन यू गेट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स. सो लुक एट द सिलेबस, jot down all the topics, and just after studying that topic, make a note with essential words, half sentences, synoptical manner, so that you ingrain all the points for that particular topic. Keep revising it so that you know if a question is asked from that topic, you have all the points in your mind and you can just express it. Expression you will learn by reading. If you read more, you will be a good expression, you will have good expression, you will be better expression of the language. तो पढ़ना जरूरी है ना. किताब कहां कहां कितने कितने सारे हैं उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए अब, है ना. जिन्होंने किताब लिखा उनको चिंता करने दीजिए कि भाई हमारा कितना किताब लोगों के पास पहुंच रहा है, उनको कितना अपने किताब से रॉयल्टी मिल रहा है, वो चिंता करें. आप चिंता करें कि आपको जो टॉपिक बताया गया है उस टॉपिक से अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप लिख पाएंगे. आपकी सब टॉपिक में ये चिंता होनी चाहिए. ठीक, और ऑप्शनल से लेकर जनरल स्टडीज तक यही चिंता कीजिए. Okay, so what I do is when I start a topic, I just try to give you a brief outline of what all I am going to introduce in that topic. So what you see in basically Western political thought is we have two very significant ancient thinkers. So if I divide it age-wise, then we have two very classical thinkers, Plato and Aristotle. Okay, that we have to know. So we have to know many things with regards to these two very significant stalwarts of Western political philosophy. दो ये महान दार्शनिक हैं और इनका दर्शन अगर आपने समझ लिया तो इससे कठिन पॉलिटिकल साइंस में आपको कुछ भी समझने को नहीं है. खासतौर पे प्लेटो, इसलिए हम प्लेटो से ही शुरू करते हैं. अभी अभी फ्रेश हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा समझदार हो जाएंगे तो फिर आपकी अपनी भी दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाने लगेंगे आप. तो क्योंकि अभी आप एकदम फ्रेश हैं, आपके दिमाग में जो कुछ भी भरा जाएगा उसके लिए थोड़ा सा मेमोरी में स्पेस है. फिर बाद में क्या होगा कि थोड़ा मेमोरी को आप जम्बल्ड कर लेते हैं, है ना. काफी सारे ऐसे फाइल्स, टेम्प फाइल्स, इधर उधर के फाइल्स, तो कुछ नई इंफॉर्मेशन जाने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है. प्लेटो को समझ लिया तो आप समझो पॉलिटिकल साइंस में आप कुछ भी समझ सकते हो. एज सिंपल एज दैट, बिकॉज प्लेटो फिलोसॉफी इज एक्चुअली 100% फिलोसॉफी, बिकॉज प्लेटो हैज नो कंसर्न ऑफ व्हाट ही सीज. Plato's major focus is what he wants. जब आप कुछ इच्छा रखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम पूरा पूरा फिलोसॉफिकल नेचर में पढ़ते हैं.
सो प्लेटो एकदम दार्शनिक है, 100% दार्शनिक है। किसी दार्शनिक का दर्शन समझना सबसे कठिन काम होता है ना, क्योंकि वो आपके हिसाब से तो दर्शन लिखेगा नहीं, उसने अपनी समझ से लिखा, और उसकी समझ तो बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। सो दैट्स व्हाई एरिस्टोटल के बाद जितने भी लोग हैं उनके कंसर्न्स फिलोसॉफिकल बहुत ज्यादा नहीं है, उनके थोड़े कंसर्न्स रियलिज्म की तरफ हैं, थोड़े कंसर्न नेचुरल और उस तरह की जो चीजें वो देखते हैं उससे जो रिएक्ट कर रहे हैं उस पर है। प्लेटो's concern is largely philosophical. That's why we start with Plato. बस यही कारण है, otherwise you would start with anyone else. The other thing is that in between lies a very prominent thinker which is Machiavelli. So Machiavelli is someone who is neither an ancient theorist nor a modern theorist. He is at the crossroads. So basically Machiavelli stands at the crossroads of modernity. So what we say is that the modernity in philosophy begins with Machiavelli. If you would have read history, you would have known that modernity basically begins after Renaissance period in Europe. Renaissance के बाद शुरू होता है। तो रेनेसा ने जो आइडियाज कैप्चर किए, what does Renaissance capture as ideas? Political ideas only. That's our focus. If there is one representative of that idea who beautifully represents that idea, it is Machiavelli. That's why people like John Locke say that the whole of Renaissance is in Machiavelli. So if somebody has to know what was in Renaissance, just read Machiavelli, you'll understand it. So a very very important thinker for us. And ये बात मैं सब थिंकर के साथ बोलूंगा, जितने पढ़ेंगे हम बोलेंगे कि जिस वक्त जिसको पढ़ रहे होंगे वो हमारे लिए सबसे बड़ा थिंकर होगा उस दिन, उसके बाद जैसे नेक्स्ट पे आएंगे फिर हमारे लिए वो सबसे बड़ा हो जाएगा। Why? Because all these thinkers are very very important and you have to know every minute details of these particular thinkers. So what all we are going to do in terms of what is the approach that we would take, that is very essential to understand. So Machiavelli, after Machiavelli, all modern thinkers will be reading. For example, Thomas Hobbes, master, brilliant thinker, है ना। और इसके बाद जैसे ही, और everybody is trying to respond to the problems of their time through their political thinking. So you will find that everybody is a spokesperson of one or the other idea. So every thinker is contextual. Okay, that's very very significant part of our study. Then, और ये सब चीजें when we do what is political theory वाला section, तो और भी ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा जब इन thinkers को हम करके वहां पहुंचेंगे, because that will give you a very very clear idea that what all we are trying to understand through the idea of political theory when we do political theory. Okay, but we are not starting with it. First we want to understand the philosophies of all these prestigious political philosophers or thinkers. So we have Thomas Hobbes, then we will see John Locke, very very important, representative of this western tradition. और इनके बाद जितने भी लोग आ रहे हैं थॉमस हॉब्स से लेकर हमारे पास वी हैव अप टू आई थिंक हना आरेंट, ये सब कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉडर्न थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो वी हैव अ गुड mix of different schools of thought as well, which we'll try to eventually understand in due course of time. So we have John Locke, we have John Stuart Mill, all of them. तो English thinkers बहुत हैं. If you look at three very prominent English thinkers, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, उसकी इंग्लिश में जो जिन्होंने फिलॉसफी लिखी और जो हाउस होल्ड नेम बने, तो इंग्लिश फिलोसोफर्स भी हमारे पास तीन हैं. अगर इनके साथ में J.S. मिल को जोड़ दूं तो, हालांकि ये तीनों ही नहीं है, हमें पढ़ना और भी लोगों को है, इनके पिता को भी पढ़ना है, एंड अदर्स एज वेल, बेंथम एज वेल, तो काफी लोग पढ़ेंगे जो इंग्लिश ट्रेडिशन के पार्ट हैं. तो इनको पढ़ने के बाद कम से कम पश्चिमी जगत में पॉलिटिकल आइडियाज को लेकर के जिसने जितना भी सोचा, समझा, विचार किया और अपने विचार को किसी किताब में लिखा, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली हो जानी चाहिए. सो एटलीस्ट द थिंकर्स हु रिप्रेजेंट द वेस्ट, आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ देम, we would be in a position to understand all their ideas meticulously, that what they thought, what was their idea of politics, what was their idea of state, what was their idea of power, all of this, will actually become comprehensible to us, and that is what our intention is through these classes. Okay, so the good part is that we don't have to go to the medieval period, because medieval period is also signified as the dark ages.
And people say that it is the period when the knowledge was completely clouded. Orthodoxy was ruling, human psyche. And that is why what you see is that even when we go to the ancient era, there were marvelous people with some very marvelous mind. So ancient period was still far better academically than the medieval period. And when we come to the modern era, that is the period that we have to capture the essence for, because that is what is the governing principle of the modern society. यानी आज के आधुनिक समाज में हम कैसे राजनीति को ऑर्डर कर रहे हैं, पावर को ऑर्डर कर रहे हैं, और कैसे हमने पावर को डिवाइड किया है जिससे कि हम बेहतर प्रशासन बना सके, बेहतर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बना सके, ये हमें मॉडर्न थिंकर्स में समझ में आता है. बिकॉज जैसी समाज को आप आज देख रहे हैं और जैसे पावर आज डिवाइडेड है, हमेशा नहीं रही है. इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है. अब ये तो फिलोसफर्स हैं, ये तो कलम से लड़ सकते हैं, तो इन्होंने किसी एक पक्ष को अपने कलम से आवाज दी है. सो ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट वन और द अदर स्कूल ऑफ थॉट which were crucial into the building of the kind of society that we live today. आज जिस समाज में हम रहते हैं उसका एक बहुत बड़ा आधार इन लोगों के फिलॉसफी ने तैयार किया हमारे लिए. इस वजह से आज डेमोक्रेसी हो, लिबरलिज्म हो, रूल ऑफ लॉ हो, डिवीजन ऑफ पावर हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, ये सब आइडियाज हमारे लिए बड़े कॉमन आइडियाज लगते हैं. लेकिन इन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में बहुत समय लगा. क्यों? Because the philosophers would think about it, they would write it, and then because of the context of the times and the problems that the society would witness, people would accept these ideas. Okay, and that is very important. तो वो thinker हमारे लिए उतना ज्यादा important है जिसकी acceptability उतनी ज्यादा है. So somebody whose ideas were more acceptable, whose ideas were more practical, whose ideas can actually be linked to today's times, I would say that those thinkers are timeless thinkers. Because somebody writing 500 years before, somebody is writing 5,000 years before, and if their ideas still continues to guide humanity in whatever way possible, I mean, we could not undermine their immense contribution to the idea of human growth and human organization. And that is what we have to understand through this whole Western political philosophy. So this is a short introduction that I wanted to give, but what we will actually see when I start Plato को जब हम पढ़ेंगे, I can still see some old faces. प्लेटो कम समझ में आया, ज्यादा समझना चाह रहे हैं? ज्यादा समझना चाह रहे हैं. ऐसा ना हो कि आप खुद प्लेटो बन जाएं. Then your माथा will plateau, क्योंकि प्लेटो खुद अपने आप को बाद में नहीं समझ पाए. So what we'll do is, first we'll start with a very general introduction of Plato. ठीक है? So I'll try to, what you do in introduction, because this is what you focus on when you write an answer as well. और कोई भी आंसर जब आप लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? You basically introduce before you write your answer. Introduction सबसे जरूरी है. कोई भी आंसर भी जब आप लिखेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? You will introduce when you write your answer. और इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है यू हैव टू इंट्रोड्यूस इनटू व्हाटएवर यू आर गोइंग टू राइट इन योर आंसर. ओके, सो पीपल से, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि पूरा आंसर इंट्रोडक्शन में ही लिख देंगे? नो, इंट्रोडक्शन है. तुम्हें किसी ने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तुम क्या अपने पूरे जीवन का विवरण उसको इंट्रोडक्शन में ही बता दोगे? इंट्रोडक्शन में बताओगे ना तुम कौन हो, तुम्हारा क्या एज है या तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है. It is in some small simple words. So whatever you want to give an information in the answer, those information has to be contained in your introduction. This is what introduction is. Okay, so you will learn what I mean by introduction when I'll introduce Plato before you. Okay, and when we'll have some dictations for the answers, and that will actually make it more clear कि हमें कैसे answers लिखने में आगे बढ़ना है. After that, see, every thinker, as I said, is a product of his time. If you are living in today's era, and if you would have been living in some other era, definitely the society would be different. The society's understanding of a problem would be different. Maybe the system that governs you may be different. So you will have an idea which you will look at the society and then try to respond. So which means everybody is a product of his time. That is why people who are thinking way beyond their time, we
appreciate them so much, because we say that these people were genius because something that did not exist at their time, they could actually look at it and then frame an argument for it so that humanity could progress. That is why they become very, very prominent for us into our political understanding. So that's how can you understand that? How can you understand that context? By just briefly looking at the life of the person. So I would say that I'll also focus on a very brief life sketch of, and I'll do this for every thinkers. उनके जीवन की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं को मैं बताऊंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इस जीवन की वजह से उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग ऐसी रही. दैट इज, यू विल हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन अ पॉलिटिकल थॉट दैट यू कैन कनेक्ट विथ बाय द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. जैसे मान लीजिए प्लेटो के बारे में हम कहते हैं कि उनके जीवन का एक ही सबसे महत्वपूर्ण घटना था जिसकी वजह से प्लेटो की फिलॉसफी बिल्कुल एक तरफ रही हमेशा. ही वाज ओनली लुकिंग एट वन डायरेक्शन. He became a critic of democracy. Why? Because democracy punished his guru Socrates by executing him. मृत्युदंड दिया गया उनके गुरु को. पढ़ा लिखा व्यक्ति, another philosopher, profound philosopher in the Greek tradition. ये जो कष्ट है, ये प्लेटो के हर दर्शन में हमें नजर आएगा. तो डेमोक्रेसी की केवल वो बुराई नहीं करते, वो आपको यह बताने की कोशिश करते हैं अपने थॉट से कि डेमोक्रेसी के बदले कैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि फिर से दोबारा ऐसी गलती ना हो, किसी सोक्रेटिस को मृत्युदंड ना मिले, क्योंकि वो भी तो फिलोसोफर है. और कभी कभी उनके आइडियाज दे वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द स्टेट. होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार समाज में, राज्य में पसंद नहीं किए जाते. तो हम क्या करें? क्या उन लोगों की जान ले लें? एक सिस्टम है जो ऐसा कर सकता है, लेकिन कब होगा? अगर उस सिस्टम में सारे मूर्ख लोग बैठे हो तो हमें क्या चाहिए? विद्वान लोग चाहिए जो राजकाज को चलाएं. और ये जो एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेडरॉक विच वुड डिटेल प्लेटोनियन आइडिया. सो दैट्स व्हाई लाइफ स्केच इज इंपॉर्टेंट. कहां से सीखा, किससे सीखा, उनके साथ कौन कौन से लोग थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा उनके पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी में. तो इसको जानने के लिए हमें तीसरे सेगमेंट पे आना पड़ता है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस. आप किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपके जीवन में आप क्या करेंगे, वो बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है. somebody is influenced by Kiran Bedi, so from their early childhood they will have the aspiration of becoming a police officer. why? because उनका जो आदर्श है वो किरण बेदी है. तो आप किन किन लोगों के इन्फ्लुएंस में आए हैं, ये तो एक आदर्श बनाने की बात है, बट इन्फ्लुएंस का मतलब है यहां पर पॉलिटिकल फिलोसफर्स के लिए उनको किन लोगों ने प्रभावित किया. ए बी सी डी, या तो उनकी किताब पढ़ते थे, या तो उनके आइडियाज पढ़ते थे, या तो उनके काम से वो बहुत प्रभावित थे. तो मैं जिससे प्रभावित हूं, आपको क्या दिखेगा कि मेरे काम में उसकी छवि बहुत नजर आएगी. सो आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय, फॉर एग्जाम्पल, somebody who is a scientist. So when I will start my own work, whatever is the work of that scientist, I will be inspired by his ideas and it would actually be manifested in my work as well. So for every political philosopher, for example, Mahatma Gandhi. Why is Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi? Because there was a great deal of influence on Mahatma Gandhi that we can see. For example, Mahatma Gandhi was very heavily influenced by his mother. And the mother of Mahatma Gandhi is a very religious person. So Mahatma Gandhi becomes a religious person in the sense that because the mother is so much into this Jain tradition, so Gandhi becomes a non-violent man. Because the Jain traditions, one of the major essential ideas is non-violence. Okay? Mahatma Gandhi is inspired by the writings of Leo Tolstoy, John Ruskin. ठीक है? तो महात्मा गांधी भी अपने आइडियाज में उनके आइडियाज को ही लिखेंगे ना. So Gandhi will talk about Antoday. Where is Antoday coming from? John Ruskin's Unto This Last. So who has influenced whom also matters in shaping the idea of a political thinker. In the same way, we'll try to understand the influences on Plato throughout his life. And then we'll come to the ideas. कि उनके major ideas क्या है. See, this is not going to be asked in the examination.
Let me make it clear. But this is going to ensure that you are able to understand comprehensively the political philosopher. Why he became such a philosopher, why his ideas was such, because you can actually understand it from these three very prominent information. Okay. So what is it that are some of the major ideas of Plato that we have to read? One very prominent idea, जिसमें सारे सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल प्लेटो पर यहीं से पूछे गए, theory of forms. Not an easy idea. We'll try to make it as easy as possible. That's first idea, theory of forms. Then there is another very crucial idea in Plato, which is understood as the ideal state in Plato. See, every thinker wants to create some sort of an ideal state. You know, not every, but Plato tries to create. Because as I said, Plato is a philosopher. And philosopher actually has his own imagination. So what is Plato's imagination of an ideal state? He knows you can't achieve or attain that ideal state. But this is what he teaches you. कि ideal state क्या होगा? और उसके लिए वो एक बहुत strong context build करते हैं. Ideal state का मतलब आदर्श स्थिति. For example, you are living in India. What should be the ideal state? As per your thoughts. Ideally क्या होना चाहिए? हाँ? Corruption free, crime free. So you're responding to your context. क्योंकि आप corruption बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अखबारों में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं. Crime free. Somebody else? Equality. देखो, women है. She knows that there is gender inequality. So she is concerned about equality. What else? तो ideal state में ये सब होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? हाँ? Justice. What else? Safety and security. It should come from a woman because male are not concerned about safety and security, especially in Delhi. Abolition of caste system. Very good. Good education, healthcare. यानी रोटी कपड़ा मकान की तरफ आ रहे हैं, यानी लेफ्ट मार्क्स की तरफ आ रहे हैं. वो कहते हैं सब बकवास है, पहले रोटी कपड़ा मकान. समाज से विषमता दूर करो. क्लास किसी ने कहा ना, एबोलिशन कास्ट का, क्लास नहीं कहा. मार्क्स बोलते क्लास, क्योंकि उनको कास्ट समझ में नहीं आता, विदेश के लोग हैं. दिस इज आइडियलिज्म. हो सकता है ऐसा, भारत से कास्ट खत्म हो सकता है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं कि कास्ट की डिस्टिंक्शन कम से कम हो. जितनी कास्ट की डिस्टिंक्शन आज से 50 साल पहले थी, उतनी आज है नहीं है, कम हुआ है पहले से. क्यों हुआ? बिकॉज द स्टेट इज ट्राइंग टू. So what we do is we try to move towards that idealism that we think is an ideal state. Yes, we know that ideal state is not a possibility, because that is why we call it an ideal state. But ideal state was like the best conceivable idea that you could have, humanity could have. So what we wish, we try to attain that ideal. So Plato, through his philosophical bent of mind, tries to suggest path that how you could achieve your ideal state. आपने कहा ना justice, somebody said justice as well. That's why Plato would actually talk so much about justice. क्योंकि आइडियल स्टेट में जस्टिस नहीं होगा तो फिर आइडियल स्टेट कैसे होगा? सबसे जरूरी तो न्याय है. हाँ, लेकिन जैसे आप समझते हैं न्याय को, प्लेटो ने उसको अलग तरीके से समझा है. That's why his idea is concrete philosophy. Okay? And what is the means that Plato applies to attain his ideal state? केवल आइडियल स्टेट की बात करें तो बेईमानी होगी. प्लेटो ने आपको यह समझाया है that how you could achieve that ideal state. और इसमें हमें पढ़ना है the scheme of education. देखो, पढ़ाई से ही प्लेटो आइडियल स्टेट बना रहे हैं. एजुकेशन कितना जरूरी है, नॉलेज कितना जरूरी है. नॉलेज इज पावर. So in the Platonian scheme also, the scheme of education becomes very, very essential in the overall study. Okay? एक आइडिया है जो बहुत prominent है, and this is something that we can relate to the modern idea also. That is about a very important idea of communism. प्लेटो के स्कीम में कम्युनिटी की बात हुई, especially with regards to wife, so that he was not in favor of private individual, private family. He was not favoring that. बहुत ही विवादास्पद है. आपको सोच के लग रहा होगा क्या बक रहा है ये आदमी, और इसकी फिलॉसफी हम क्यों पढ़ रहे हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. इट्स नॉट फॉर एवरीवन. ही इज एक्चुअली यूजिंग इट फॉर द गार्डियन क्लास. व्हाई? बिकॉज, जिसमें एक कॉन्टेक्स्ट बता दूं, बिकॉज प्लेटो थिंक्स दैट प्राइवेट फैमिली leads to corrupting influence on individual.
तो अगर मेरे मन में करप्शन और करप्टिंग इन्फ्लुएंस किसी चीज से है और मैं आइडियल स्टेट में गार्डियन क्लास के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं और फैमिली उसको करप्ट कर सकता है, तो ही टेक्स अवे दैट होल आइडिया ऑफ फैमिली. सो विच मीन्स I will have no wife if I am from the guardian class, and I'll have no children of my own. That's why I cannot even have private property. That's why private property and private family goes. So if you start analyzing it from today's context by situating yourself in today's time, you'll not be able to appreciate that idea. But because I'll be doing this idea, so I'll be able to tell you that why Plato thought that this is a very crucial part of his ideal state. So he comes up with a very significant idea of community of wife and property. I think once we have done this part, we will be able to understand all these significant ideas of Plato. So I'll be taking this as an approach when I begin a topic. I'll be first detailing that what all I'm going to do in the topic, and then I'll move forward for all the topics, so that at least you should know the length and breadth of the discussion. कि हम अपना डिस्कशन कहां से शुरू कर रहे हैं और हमें कहां अंत करना है. So which means this is half the work which is already done. और आधा काम क्या है, हमें समझना है. यानी केवल लेंथ ब्रेड्थ नाप लिया तो क्या आप क्रिकेटर बन गए पिच में? नहीं, आप उस पर खेलने आना चाहिए. ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लेटो बिकॉज ऑफ दैट. बट इससे भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक और बड़ा सिग्निफिकेंट सेक्शन है, वो है जिस पर सवाल बहुत बार आए हैं. यूपीएससी ने बहुत बार ये सवाल पूछा है. प्लेटो के आइडियाज को ना लोगों ने जब क्रिटिसाइज किया, यानी जब हम एसेस करते हैं उसके आइडियाज को, तो प्लेटो ने कहा कि फासिज्म की बू आ रही है. कल किसी ने फासिज्म के बारे में पूछा भी था मुझसे. somebody asked me about fascism. बहुत ज्यादा देखो एकदम इंस्पायर्ड है फासिज्म से. अभी पॉलिटिकल साइंस में एंटर भी नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा इनको हॉन्ट कर रहा है फासिज्म. पता नहीं क्यों, बट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नई सड़क पे, नई सड़क, ये दरियागंज नई सड़क, वहां पे जो लोग सड़क से किताबें खरीदते हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब पता है क्या है? बाकी कोई भी हो, उसमें हिटलर की मे कैफ बहुत ज्यादा बिकती है. पता नहीं लोगों का क्या रोमांस है विथ एडोल्फ हिटलर. खूब जानना चाहते हैं कि क्या लिखा है हिटलर ने, और काफी लोग उनसे बहुत संवेदना भी रखते हैं, है ना. ये भी बड़ी अजीब बात है. तो पॉलिटिक्स में इतना जबरदस्त डिसएग्रीमेंट हो कि लोगों को हिटलर से भी संवेदना हो जाए, ये दिखाता है कि मनुष्य बड़ा संवेदनशील प्राणी है. ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बनता है, वो हम इसके आइडियाज में पढ़ते हैं, वो है क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल पॉपर. So definitely we'll criticize him from many different thinkers' point of view as well. But one very significant criticism that we have to read is, और ये मैं अलग से कराऊंगा because this is a very significant part of the discussion, because the way Karl Popper has criticized Plato by basing his idea on his book which is Open Society, nobody else have done it. It's a brilliant critique जो आपको शायद एक पॉलिटिकल थॉट की एक अच्छी फाउंडेशन में मदद करेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों उनको क्रिटिसाइज किया. और बेसिकली कार्ल पॉपर ये कह रहे हैं कि प्लेटो कुछ नहीं है, he is just one of the major thinker who is ensuring and defending the idea of totalitarianism. If in political philosophy you see totalitarianism as an idea, there is no better person who can be linked with that idea than one of the most talked about classical political philosopher, that is Plato. ठीक है, तो ये इन्होंने समझाया, and he has constructed his argument beautifully. So after we have done all these, we will try to ourselves try to assess Plato. ये हमारा conclusion होगा. It is more like an assessment कि प्लेटो सचमुच में क्या वैसे ही थे जैसा लोगों ने बताया उनकी आलोचना करके, या प्लेटो कुछ और थे. और जब हम किसी थिंकर को एसेस करते हैं तो हम एक हमेशा पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं कि नहीं देखो, उस थिंकर ने अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने समय में अपनी बात कही. एंड वी शुड नॉट ट्राई टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. सो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वेज इन विच यू रीड अ बुक. वन इज what is written in the text and you just focus on the meaning of the text.
The other is to understand not only the text but relate that text with the context of the times. ठीक है, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार है. फीमेल्स आर कंसिडर्ड टू बी द वीकर सेक्स, है ना. कुछ लोग अग्री नहीं करते, कहते नहीं सर ऐसा नहीं है, बट इट्स अ रियलिटी. उन्होंने शायद अभी समाज को ठीक से समझा नहीं है या देखा नहीं है. तो महिलाओं के लिए बड़े कठोर कानून है. So you can say that this is a violation of equality. Why should there be special laws which should be very stringent laws for the weaker section, especially women as well as Dalits? SC/ST Atrocities Act 1989, very, very tough law where you actually do away with many of the ideas which are very important for criminal jurisprudence, which means you can be arrested just on an FIR. Without any inquiry, you will go to jail. And then you have to apply for your bail. What does criminal jurisprudence say? कि भाई पहले एक इंक्वायरी तो हो जाए, FIR तो मालूम मैंने करा दी आपके खिलाफ, तो पर मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो? It is taking away my right to life, my freedom. But why are you putting me behind bars? Because for those sections which are vulnerable in today's time, in order to ensure that justice is also served to them and there is a deterrence that justice provides, you have made stronger laws. अगर ये कॉन्टेक्स्ट आपने नहीं देखा तो आपको क्या लगेगा कि ये काम ठीक नहीं हो रहा. आप बोलोगे ये पुरुष की प्रताड़ना है. यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग विच इज नॉट एज पर द स्पिरिट ऑफ जेंडर जस्टिस. बट दैट इज नॉट ट्रू. यू कैन लॉजिकली आर्ग्यू कि नहीं ये ठीक नहीं है. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट. क्यों ऐसा है ना. रेप लॉज आर इन फेवर ऑफ वुमेन. इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी में. मैकियावेली कुछ कह रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट है, और हम अगर उसे अपने कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर देखेंगे तो शायद हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे. हाँ, इफ वी हैव टू स्टैंड ऑन द शूज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोस टाइम्स, वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए दैट वी हैव टू आल्सो गो टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंकर. ओनली देन वी विल हैव सम रेलेवेंस ऑफ हिज पॉलिटिकल थॉट. ओके, सो आई वुड से दैट एंड यू जस्ट हैव टू टेक द रनिंग नोट्स हियर व्हेन आई एम डूइंग द इंट्रोडक्शन एंड द लाइफ स्केच पार्ट. सो the intro part, very significant. But here I'll not be dictating, you have to take the running notes. So as soon as I write, you also write along with me. So what is very important for Plato, if you try to introduce Plato, you will find that first and foremost, I have to focus on the major works of Plato, which basically makes him a philosopher who is so admired. यानी प्लेटो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एडमिरेशन भी खूब मिलती है. और जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा एडमिरेशन मिले तो ये मानकर चलो कि उसके क्रिटिक भी बहुत होंगे, है ना. प्लेटो एक ऐसा व्यक्ति है जो जितना एडमिरेशन जिसके पास मिला है उसको उतनी ही क्रिटिसिज्म मिलती है उसको. सो ही इज एडमायर्ड, ही इज क्रिटिसाइज्ड, ही इज आल्सो रिवियर्ड. रिवरेंस का मतलब क्या होता है? बहुत आदर, बहुत रिस्पेक्ट किसी व्यक्ति को मिला है पॉलिटिकल थॉट में, वो प्लेटो है. सो ही इज समबडी हु इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट is admired, he's received so much of admiration, he's received so much of criticism, but he's also revered by many people. So essentially, what is our point of view? We'll focus on his 3 essential books which he has written, and that book will become one of the important reference for our entire discussion that we'll undertake. So 3 जो बड़ी किताबें हैं प्लेटो से आई हैं, can you name them? The most, so जो सबसे फेमस जो किताब जिसको हमें रेफर करना है वो है द रिपब्लिक. एंड इट इज बिलीव दैट, और हम बीसी की बात कर रहे हैं, जब आप बीसी में जाते हैं तो एज एक्चुअली उल्टी तरफ चलता है, ये तो पता होगा आपको. सो इफ आई एम रेफरिंग टू अ टाइम पीरियड इन बीसी, देन यू डू रिवर्स काउंटिंग. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू कम टू 0 and then you will start counting in the increasing manner. Okay, so we always count it in the reverse manner. So it is believed that somewhere between 380 to 370 BC this book was written, the Republic. And very rightly pointed out, this second book which was written by Plato is the Statesman.
and this is roughly written in the 360 BC. This is another very crucial reference for us, and these are more informative. ये उन लोगों के लिए होता है जो जैसे मान लीजिए नेट के एग्जाम में अपीयर होते हैं बहुत बच्चे, है ना, या फिर कोई इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर की बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो व्हाट वी आल्सो डू इज वी आल्सो ट्राई टू एनरिच दिस क्लास विथ एज मेनी इंफॉर्मेशंस, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, सो दैट अगर आप एक थिंकर को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाए किसी एग्जामिनेशन में, तो यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर दैट एज वेल. Yeah, but our primary focus always remains on the analysis of his work, of the person. And then we have another major book which is the Laws, which is written roughly around 350 BC. Okay, so these are three prominent Plato's work that is part of our reference. So, you know, if you look at Plato के बारे में एक बात कही जाती है कि Plato is someone who is revered as a founder of philosophical idealism. मैंने कहा कि Plato creates an ideal state. So Plato की जो सबसे बड़ी contribution है वो है that he is revered as a philosopher who is hailed as a philosophical ideal thinker. यानी political philosophy में अगर किसी thinker ने idealism के ऊपर सबसे जबरदस्त काम किया, वो प्लेटो हमारे सामने नजर आते हैं. That is why if you look at the tradition of the West, you will find that in the entire history of the political ideas, Plato's importance lies in the fact that people say that it is, why is so important? Because he is a founder of philosophical idealism. So what we have to do is we have to understand this part of Plato's work. कि लोग उनको फाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म जैसा, यानी एक ऐसी एडजेक्टिव हम प्लेटो के साथ क्यों लगाते हैं? Why is Plato hailed as somebody who is a founder of philosophical idealism? Because Plato has tried to teach us one thing, and let me give you a brief hint over here. Plato is such a philosopher who would tell you that there is an universal idea which exists in the world. For example, the idea of a man. So he says that there has to be one universal idea of the man. ठीक, ये बात तो समझ में आई? For example, idea of a horse. So he would say कि एक universal idea has to be there in the world of anything which is part of the reality, but that idea which is part of the eternal reality is not within the realm of our senses. हम जो सेंस से जिस आइडिया को समझते हैं, it is not the real idea. The real idea is something else. प्लेटो में एक बड़ा फेमस कोट आता है that reality is the shadow of ideas. That's why he is called father of philosophical idealism. Because his major work is to focus so much on the concept of idea. एक आइडिया के तौर पर हम क्या समझ रहे हैं, प्लेटो की इसको लेकर के बड़ी चिंता है. और प्लेटो मानते हैं कि वो जो आइडिया हम समझते हैं दैट इज इम्परफेक्ट. सो प्लेटो इज टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन अटेन द परफेक्ट आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ परफेक्ट आइडिया फॉर एनीथिंग. आइडिया ऑफ ए गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ अ स्टेट, whatever exists in this world, it is not the real idea of that particular idea. So he says कि एक idea है जो universal है और eternal है, which means across time and space that idea will be the most prominent idea, most correct idea. That's why what he comes up with the conviction that हम जिसको अपने sense से समझते हैं उसकी अपनी limitation है. We are not understanding the reality in its totality. And he proves it by his allegory. कुछ ऐसे वो examples देके हमें समझाने की कोशिश करते हैं अपनी किताब में. That's why theory of form is very crucial as one of the main ideas. So that's why I said that when you start reading Plato, Plato's major purpose is to first give you a concrete concept of the idea. First, he wants to establish the fact that what you know as idea is not the real idea. It is just a shadow of the real idea. For example, I am standing here
my shadow is not visible right now. So if imagine that my shadow is visible. So what you're seeing me, I am real as an idea, but I'm something else. Does my shadow manifest the reality? Maybe the shadow is short because of a particular time of the day. The shadow is longer because of a particular time of the day. So are you actually looking at me really? So by looking at the shadow, can you make out, understand what is my height? How do I look? Very difficult. So it is just a imperfect idea that you will come across. अगर आप कोशिश भी करेंगे to understand what is this person who is standing here, what is his idea, तो you will not be able to get the complete idea. So सबसे पहले तो हमें ये जो shadow है और ये जो हमने आइडिया के बीच में जो समस्या खड़ी की है, प्लेटो कोशिश करते हैं कि पहले आपको उसके लिए सही आइडिया समझाने का मार्ग बताएं कि आप सही आइडिया कैसे समझ सकते हैं. Okay? That's why people would hail him as somebody who is a founder of philosophical idealism. Okay? So his major concern is about that how to create a best life in the state. फिलोसोफर हमेशा आपको एक रास्ता बताते हैं कि आप एक बेहतर जीवन कैसे जी सकें. प्लेटो की भी यही कोशिश है कि एक व्यक्ति जो एक राज्य में रह रहा है वो एक अच्छा जीवन कैसे जिए. तो उसके लिए वो क्या बताएंगे आपको, पहले बताएंगे कि मनुष्य की प्रकृति कैसे होती है, व्हाट इज ह्यूमन नेचर, एंड हाउ डू यू इंश्योर दैट विद दीज पीपल एंड देयर नेचर हाउ कैन यू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल सोसाइटी फॉर देम. तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है प्लेटो का? हिज कंसर्न इज गुड लाइफ फॉर इंडिविजुअल. Okay, and how to attain it. And on this particular fact, there can be differences between Plato and other thinkers, because every thinker will have their own logic and will have their own ideas to help you demonstrate that how can you reach towards a good life. हो सकता है उनके अपने शिष्य, that is Aristotle, he would have a different idea of a good life and would not agree with Plato. But that's understandable. Why? Because in political philosophy, you work on ideas, but you also try to improve the pre-existing ideas. So for example, I will start reading an idea and I will think that, you know, these are the deficiency in the idea. If we can remove these problems, these ideas can become better. So people will do it over the years, over the course of time. And therefore, we will have many people who would actually think so much about how can individual live a better life, a good life, and how to attain that good life. ग्रीक फिलॉसफी का जो सबसे बड़ा एम्फेसिस है वो यही है कि मनुष्य को हम बेहतर जीवन कैसे दे सकें. तो इसका यह मतलब है कि जो फिलोसफर्स उस वक्त थे उस बात से सहमत थे, एकमत थे कि जो जीवन ये जी रहे हैं ये बेहतर नहीं है. तो अभी तो आप कोशिश करोगे ना दैट यू नो वी आर गोइंग टू गिव देम बेटर लाइफ, हाउ टू गिव देम गुड लाइफ. सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज मैनिफेस्टेड in the entirety of the Greek philosophy, where there is so much of concern that how can individual be organized into some sort of an organization that would ensure that they live a good life. उनके जीवन थोड़ा बेहतर हो या बेहतर हो सके. How they can lead best of lives in the state. How can they live as best organism in the state. यानी मैं अगर रह रहा हूं प्लेटो के स्टेट में तो प्लेटो का कहना है कि वो मेरे लिए सबसे उत्तम स्थिति है हमारे जीवन को लेकर के उस राज्य में. That is, when I am living in that state, that is the best state I can attain in the state which Plato constructs for me. यानी मैं उससे और बेहतर स्टेट में नहीं रह सकता. यानी प्लेटो की इतनी जबरदस्त कोशिश है through his ideas that he wants to demonstrate. Okay? Then what he does is that he will actually give you an account, a detail of problems of the real world and how one can overcome the problems. So Plato की भी ये कोशिश है, like any philosopher, he first gives you a very detailed account of the problems that the real world is facing. So for example, Plato would say that I see that there is a great problem in Greece because people who are ruling
in the Greek city states, for example, he was an Athenian, so Athens, people who should rule, they are not ruling. So there's a problem. And if people who should rule, they are not ruling over the state, then it will lead to a crisis. Crisis तो होगी ना, समस्या आएगी. So he is not only talking about the crisis, he is also telling you that how you can overcome that crisis. तो वो रास्ता बताते हैं आपको कि आपने अगर मेरे रास्ते के हिसाब से काम किया, जो मैंने आपको उपाय बताए, तो उससे आप इन समस्याओं से निजात दिला सकते हो अपने राज्य को. तो अगर मान लो राज्य में उपयुक्त व्यक्ति शासन में नहीं है, तो वो आपको रास्ता बताते हैं कि उपयुक्त व्यक्ति को कैसे ढूंढकर शासन में लाया जाए. दैट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज हिज मेजर फोकस ऑन हिज वर्क. और इसलिए प्लेटो महान है, बिकॉज प्लेटो ने केवल समस्याएं नहीं बताई आपको, प्लेटो ने समस्याओं को हम कैसे दूर करें उसके स्कीम्स के बारे में बहुत इलेबोरेट डिस्कशन किया. बहुत विस्तार से उन्होंने इसके बारे में चर्चा की. और इसीलिए प्लेटो की कुछ लोगों ने आलोचना भी की और प्लेटो को कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया, है ना. और कुछ लोगों ने कहा कि प्लेटो ने ह्यूमन एक्सेलेंस को जितना ज्यादा महत्व दिया है, उतना ज्यादा पॉलिटिकल फिलॉसफी में कोई नहीं दे पाए. कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि प्लेटो जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने मटेरियलिज्म को मजबूत करने के लिए, अपने सेल्फिशनेस को, क्रूड सेल्फिशनेस जैसे शब्द इस्तेमाल किए प्लेटो के लिए. ये हम प्लेटो के क्रिटिसिज्म में एक बार फिर से देखेंगे. इसलिए मैंने कहा इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें हम मेंशन करते जाते हैं जो हमें बताना होता है कि प्लेटो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना. सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी, then I have no doubt that there are two people who should be credited with establishing the Greek political philosophy tradition. So and I cannot leave Aristotle as well, because although I'm reading Plato, but if I combine Plato with Aristotle, and Aristotle is again the disciple of Plato, और उस वक्त डिसाइपल का मतलब ये नहीं था कि एकदम गुरु शिष्य थे, पढ़े थे वहां. उन्होंने जो विद्यालय बनाया था उसमें एरिस्टोटल भी काफी समय तक पढ़े, फिर वहां पढ़ाया भी. तो इस वजह से हम ये मानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस्ड रहे काफी. वैसे ही सोक्रेटिस एकदम से गुरु नहीं थे, वो से इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने प्लेटो को इन्फ्लुएंस किया. बट व्हाट इज इट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टू स्टॉलवर्ड्स ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी? यू नो, वी से और दे आर क्रेडिटेड फॉर establishing the Greek political philosophy. ठीक है, तो यहां तक के इनके इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है. और आई शुड अगेन टेल यू, दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज द क्रेडिट दैट गोज टू दिस टू जेंटलमैन. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो हम पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फाउंडेशन, यानी इसका जो बेस है, इट रेस्ट्स ऑन, काफी प्रशंसा हो गई इनकी. मैं बता रहा हूं कि पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन, उसकी फाउंडेशन एरिस्टोटल और प्लेटो के आइडियाज में आपको दिखती है. They are the ones who are credited with laying the groundwork, the foundations of Western political thought or Western political traditions. Okay, that's why, you know, if you look at one of the quotes that I'll give you, which is given by Whiteheath, this is a quote he says, and this is a very strong commentary, I would say. वो कह रहे हैं कि पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी अगर आप पढ़ते हैं, it is nothing but a footnote to Plato and Aristotle. You know what does footnote mean? So you would be reading some books, and in the book, in the page itself, let me just show this schematically. अगर मान लो ये किताब है, तो आपको क्या दिखेगा, नीचे में एक ऐसे लाइन बनी रहेगी और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे और उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन्ड होगा उस पेज में, उसी पेज के नीचे. यानी ये फुट हो गया इस पेज का, और यहां पर नोट लिखा गया, और ये एक नंबर आपको यहां पर कहीं लिखा हुआ दिखेगा, यानी एक्सप्लेन करेंगे. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू आर रेफरिंग टू दीज पर्टिनेंट आइडियाज in order to explain your idea. Is it clear? Now, what does Whiteheath say? He says the entire Western political philosophy is nothing
but it is the footnote of Plato and Aristotle, है ना. So write this statement, इसको लिख लीजिए. White heat कैसे लिखेंगे? WHITEHEADTHE. White heat consider that the entire European philosophical tradition is nothing but a set of footnotes to Plato and Aristotle. Another person, Ralph Waldo Emerson. Write down this name next में. Ralph Waldo Emerson believes that Emerson, E-M-E-R-S-O-N, Emerson believes that Plato is philosophy. Plato is philosophy and philosophy is Plato. And philosophy is Plato. For out of Plato, यानी एकदम से कैसे होगा, इसको आज के समय में लोग कहेंगे ये तो एकदम प्लेटो भक्त है, पूरी फिलॉसफी को प्लेटो मानता है और प्लेटो को फिलॉसफी मानता है. But look at these great people who have admired Plato in that sort of a sense. So that shows the extent of the greatness of these philosophers. For out of Plato, Plato is philosophy and philosophy is Plato. For out of Plato, F-O-R-O-U-T, for out of Plato comes all things that are still debated and written among men of thought. So, मैं आपको शुरू में क्या कहा कि if you have to analyze the greatness of a philosopher, you have to understand that the concentration on the issues that the philosopher has made, is it the issue that is still being a subject of concern, and people who are thoughtful, people who are knowledgeable, they are still debating those issues? So this is what he is saying, that he is so valuable because he has given us those concrete ideas, philosophies, which are still being debated into this world. For example, justice. Is it a debate or not? You know, so what you see in Plato, he has raised such important question and he has given his idea so beautifully by basing his ideas on philosophy, that is the subject of debate even at the present time. That is why, you know, his work carries more importance than what you can see in the entire libraries and the knowledge that an entire library could give you. That is why he is using these kind of idioms, that philosophy is Plato and Plato is philosophy. That's the point he is trying to make. फिर एक, और जैसे मैंने कहा कार्ल पॉपर इनके बड़े क्रिटिक होते हैं, तो इंट्रोडक्शन में इस बात को हम और जिक्र कर देते हैं. जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया, that why is Plato so important, why is so admired, because he is somebody who has written this extensive work, he is somebody who is
founder of this school of thought. His concentration has mostly been on these sort of ideas. Then what we have done is what he did. So after that, we are looking at trying to substantiate the points that we have made above, that why they are so prominent. But we can't end the discussion, especially in social science, without finding out limitations or deficiencies of anyone, be it anyone. कोई भी व्यक्ति हो, थिंकर हो, फिलोसोफर हो या आइडिया हो, हम उसकी कमी जरूर बताते हैं, है ना. जैसे हमारे देश में कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, हाँ, आप सबके मन में एक खूबसूरत चित्र होगा, आप वो चित्र किसी को बताइए, कोई ना कोई कमी निकाल देगा, है ना. तो ये सामाजिक जीवन है, यहां पर कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती. उस परफेक्शन को ढूंढने की कोशिश कौन कर रहा है? प्लेटो कर रहा है, कि कैसे हम एक परफेक्ट आइडिया को डिसाइफर कर सके, इसको समझ सके, क्योंकि हम जो रियल सेंस में समझते हैं वो रियलिटी है नहीं, है ना. तो इसलिए प्लेटो जो हमें बताना चाह रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी फिलॉसफी है, और इसलिए ये एडमिरेशन है. और जो एक सबसे बड़ा प्लेटो को लेकर के क्रिटिसिज्म है, दैट his ideas were the front runner of totalitarianism, that Karl Popper puts up. Okay, so we'll end with this part where we introduce Plato. However, next point mein likhega, and when I say next point, what you have to do is you have to just give a small dash so that you can know that we are writing a next point and you are deviating from the previously worded arguments. Otherwise क्या होगा कि पूरा का पूरा एक पैराग्राफ में आ जाएगा, so you'll not be able to distinguish कि हम अलग अलग जगह क्या कर रहे हैं. तो इसलिए ऐसे हमेशा डैश देकर के सिनॉप्टिकल वे में लिखते रहना है व्हेन वी से नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट नंबर. ओके, हाउएवर his criticism largely emerged from understanding Plato as a thinker who is hostile towards and you understand what hostile means? Who is hostile towards progressive, humanitarian, and democratic ideals. And regard him, इसी में जोड़े हुए चलना है, and regard him as the front runner of philosophical front runner of, and regards him as, कोई पीछे छूट जाए तो एक बार अपना हाथ उठा दे तो मैं समझ जाऊंगा, I'll repeat it. And regards him as the philosophical front runner of, regards him as philosophical front runner of, FRONTRUNNER, front runner of modern day totalitarianism. So these are all political ideologies. ऐसे शब्द हम यूज कर रहे हैं. We have not done ideology yet, but as soon as we look at these sort of concepts, I think it will make more sense to you gradually. So right now, you just write the word totalitarianism, and you should understand in simple words that totalitarianism simply means a system where one authority has total power. For example,
Look at India. If you think that the executive also has judicial power, then what will happen? हाँ, what will happen? मैं तो सीधा कॉन्सिक्वेंस पूछ रहा हूं, तो अपने देश को समझते ही हो और अपने नेताओं को पहचानते भी हो. All oppositions will be behind bars. हाँ? तो ये अच्छा है, बुरा है ना? तो अगर हम कोई टोटलिटेरियन सिस्टम की पैरवी कर रहे हैं या हम पैरवी ना भी कर रहे हो, हमारे सुझाए हुए उपाय से एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जहां पर एक व्यक्ति के पास सभी पावर है और वही व्यक्ति जो कहता है वही सत्य है, तो ऐसी स्थिति हमारे लिए तो बड़ी भयावह हो सकती है. और प्लेटो के आइडियाज में वी हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन. दैट इज व्हाई पीपल लाइक कार्ल पॉपर वुड से दैट प्लेटो इज अ फ्रंट रनर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. दूसरा शब्द वो यूज करते हैं, ही इज एन एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, बिकॉज ही इज समबडी हु वांट्स सोसाइटी टू बी ओपन. तो उनकी जो किताब है ओपन सोसाइटी, पहले उसकी चर्चा करेंगे हम, और उसके बाद उन्होंने जो उस किताब में लिखा है एज अ क्रिटिक ऑफ प्लेटो, वो जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो दिस इज लार्जली माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटो. सो व्हाट वी सी प्लेटो, सी if you are born into a particular kind of family, that will also be a very important reason for you to have developed a particular kind of taste. ऐसे परिवार में आप पैदा हुए जहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई में नेचुरल रुचि होगी. मतलब बहुत ज्यादा साइंटिस्ट के परिवार में आपने कभी देखा है कि कोई बहुत बड़ा फुटबॉलर क्रिकेटर पैदा हुआ? साइंटिस्ट माता पिता हैं तो बच्चे को भी धकेल के वहीं घुसा देंगे. वो बचपन से वो प्रयोगशाला में ही देखता है, हाँ ये पानी मिलाने से ये होगा, वो भी कुछ ना कुछ मिलाता रहेगा. यानी जब आप शरबत बनाते हैं, चीनी पानी मिलाते हैं, तो वो सोडियम और क्लोरीन को मिला रहा होता है. व्हाई? बिकॉज इट्स अ कॉन्टेक्स्ट. दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो इवन योर बर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन योर लाइफ. कार्ल मार्क्स भी इस पर बड़ा फोकस करते हैं. वो कहते हैं कि आपको लगता है कि आप जो करना चाहते हैं आप वो करेंगे, और ऐसा नहीं है. सब कुछ क्लास डिटरमिन करती है कि आप क्या करेंगे अपने जीवन में. आप एक्सप्लॉइट ही होंगे. अगर आप प्रोलेटारिएट क्लास में पैदा हो गए हैं तो आपका एक्सप्लॉइटेशन है, आप कभी एक्सप्लॉइटर नहीं बन सकते. ये क्लास सिस्टम ने स्पष्ट कर दिया है. तो एक एक व्यक्ति को जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या है ना कि उसके फैमिली, उसकी सोसाइटी, उस वक्त पॉलिटिकल स्थिति दुनिया की कैसी थी, जहां वो रहते थे वहां कैसी थी, all of this had a very important influence on the shaping of a character of a philosopher. Plato is also one of them. So there are some informations that you need to just jot down so that you understand what was Plato's life like and why would Plato become such a thinker. So very important information. The first one is that he is born in roughly around 427 BC. और कहाँ पैदा हुए वो? एथेंस में पैदा हुए. तो किताबें तो 300 में देख रहे हैं हम, पर मैंने क्या कहा कि हम रिवर्स गियर में चलते हैं जब हम बीसी में होते हैं. तो 427 बीसी में एथेंस में पैदा होते हैं. एंड हिज फैमिली इज एरिस्टोक्रेटिक. कैसी फैमिली मिली इनको? एरिस्टोक्रेटिक. व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? या सो इट इज मोर लाइक द रूलिंग क्लास, कह सकते हैं. सो एरिस्टोक्रेट्स जैसे मंत्री है ना, किसी किंगडम में यू हैव गॉट सम पोजीशन, जैसे इंग्लैंड में होता है ड्यूक, और इस तरह के पोजीशंस आपको मिल गए, which means you are part of the ruling class. Ruling class is very powerful. Ruling class will have access to resource. They will have good access to educate their children, their ward, and if the child is bright, जो प्लेटो थे, तो you can actually excel in education as well. So the good thing is that his family is aristocratic, है ना, and which means his family was basically part of the ruling family. His father was Ariston. इनके जो पिता थे, इनका नाम था एरिस्टॉन. And he traced his origin to early kings of Athens. So very simple information, but a very powerful one in order to help us understand that why would he himself develop as a very profound philosopher in the very first place. So Athens के जो शुरुआती दौर के, जो काफी पुराने दौर में जो राजा बने थे, उस परिवार से ताल्लुक रखते थे प्लेटो के पिता, जिनका नाम एरिस्टॉन था. ठीक है. एंड एथेंस इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट अ प्लेस बिकॉज इन एथेन
there was so much of concern for laws. We think that law is a given fact of our life, but there used to be times when there was no law. Why? Whatever the king said was the law. यही होता है ना, जो सॉवरेन होता है, हिज कमांड बिकम्स लॉ. राजा ने कहा कि तुम्हें 100 कोड़े लगेंगे, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि मेरे इस अपराध के लिए कहां लिखा हुआ है कि मुझे 100 कोड़े लगेंगे. उन्होंने जो कहा वही कानून है. तो एथेंस इज सच अ स्टेट, लुक एट द एंशिएंट एरा, विच हैज ऑल्सो गिवन अस लॉ. और लॉ देने वाले कौन से व्यक्ति हैं? उनका नाम है सोलन. नॉट सोलन विच इज इन हिमाचल प्रदेश, सोलोन. So this is Solon, and Solon is understood as the lawgiver of Athens. ठीक है. इसलिए एथेंस में हर चीज को लेकर के they have some figure. So and his mother, which means the father, is tracing his origin to the early kingdoms of Athens, the kings of Athens, while mother is, so the mother family is part of, mother trace her family origin to Solon. तो यानी बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है. मां भी ऐसे जगह से आती हैं जहां पर you have somebody like Solon who is the law giver, and similarly the father comes from a family, he traces his ancestry from the early kings of Athens, है ना. So पेरिसियोटीन उनका नाम था. जो उनकी माता जी थी उनका नाम था पेरिसियोटीन. जैसे भी we can pronounce it, पेरिसियोने, CITIONE, तो पेरिसियोने बनेगा. हाँ, पेरिसियोने. So that was basically the name of the mother. Not much important, बस just for the sake of informations. प्लेटो का ओरिजिनल नाम क्या था? एक्चुअली प्लेटो नाम तो था नहीं उनका. प्लेटो's ओरिजिनल नेम वाज एरिस्टोटल्स था. इसलिए लोग कहते हैं कि एरिस्टोटल और प्लेटो जो था उसमें बहुत ज्यादा अंतर कहाँ है, ये तो वही है. नहीं, वही नहीं है, दोनों अलग अलग लोग हैं, बट उनका सचमुच का जो नाम था दैट वाज एरिस्टोटल्स. दैट वाज प्लेटो's ओरिजिनल नेम. एंड इसका नाम का मतलब बड़ा जबरदस्त होता है, इसलिए लोग अपने बच्चों का नाम बड़ा अच्छा रखते हैं. आपने देखा हमारे देश में लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे का नाम रखते हैं किसी ईश्वर के नाम पे, सोचते हैं कि उसकी कैरेक्टर, उसकी ट्रेट्स आएंगी. हाँ, सो महादेव, थिंग्स कि एकदम भगवान शिव जैसा होगा, तांडव करेगा. सच में तांडव करके दिखाता है परिवार को. वैसे ही घर में बच्चियां होती हैं तो लक्ष्मी, विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी. सिमिलरली कुछ लोग अपने बच्चे का नाम ऐसा, विराट, काफी विराट, काफी भव्य. देखो केज अटेंड विराट, विराटडम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अचीवर बना वो. तो बच्चे का नाम से भी क्या थोड़े बहुत गुण मिलते हैं, और ये हर सिविलाइजेशन में रही है. इसलिए जो एरिस्टोटल्स नाम है उसका मतलब होता है द बेस्ट एंड द रिनाउंड, यानी सबसे उत्तम और सबसे प्रसिद्ध. ग्रीस में, ग्रीक भाषा में इसका यही मीनिंग होता है. इसका मीनिंग जो होता है वो होता है बेस्ट एंड रिनाउंड. तो उनके माँ बाप ने सोचा कि हमारा जो बेटा होगा वो बेस्ट होगा और रिनाउंड होगा. बना, बिकॉज अगर फिलोसफर्स ये कह रहे हैं कि द एंटायर वेस्टर्न यूरोपियन फिलोसफी इज द फुटनोट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, तो इससे ज्यादा रिनाउंड किसी बच्चे को और क्या मिल सकता है. खुश हो रहेंगे कि हमने सही नाम रखा अपने बच्चे का और नाम के अनुरूप गुणी हुआ. इसलिए हमारे देश में कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, क्योंकि फिर रावण वाले थोड़े ट्रेट्स आने लगेंगे. राम रखते हैं कि राम के गुण आए. सीता भी रखते हैं, या सीता के अलग अलग नाम भी रखते हैं, बट रावण या मेघनाद ऐसे नाम नहीं रखते. हाँ, जो एक सोते रहते थे उनका क्या नाम था, कुंभकर्ण. हाँ, ऐसे नाम नहीं रखते. ठीक है. सो दैट्स प्राइमरली द आइडिया. लेकिन ये प्लेटो नाम उनको मिला कैसे, ये बड़ा खूबसूरत एनेक्डोट है. एक्चुअली प्लेटो को ये नाम एक निकनेम के तौर पे मिला, और
हमारी किस्मत कि हमें उनका निकनेम ही पता है, उनका ओरिजिनल नेम पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। इनको ये निकनेम मिला क्योंकि बड़ा अच्छा नाटक करते थे। तो आप में से अगर किसी को नाटक में रुचि है तो देखिए आपके भी प्लेटो बनने के चांसेस है। मतलब ऐसी चीजों को आप दूर ना रखें अपने आप से। सो बेसिकली हिज निकनेम वाज प्लेटो, एंड प्लेटो निकनेम वाज डिराइव्ड फ्रॉम प्लेस, प्ले मतलब नाटक, एंड he was playing a part which was, basically people called him Plato because when he used to participate in the plays, Plato used to have very broad shoulders. उनके shoulders बड़े broad थे, and because he had very strong shoulders, broad shoulders, उनको जो नाटक में जब वो भाग लेते थे तो नाटक में उनका, और उसका मतलब यही होता ब्रॉड शोल्डर्स, उसको प्लेटो कहते हैं, एंड दिस इज वेयर ही वाज कॉल्ड एज प्लेटो। ही वाज वेरी गुड लुकिंग, बड़े हैंडसम दिखते थे, एंड ही वाज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वेरी चार्मिंग इन हिज लुक। तो ये सब उनकी खूबसूरती थी, बड़े ब्रॉड शोल्डर्स थे, इसीलिए जब वो नाटक में भाग लेते थे वहां उनको लोग उनके निकनेम उन्होंने रख दिया था प्लेटो, इसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। Got the context? Not the real name. Now, because he is born in a very rich family, he could read and he could actually understand many things. So what he did was he studied several different disciplines in his life. खास तौर पे three very important disciplines: music, poetry. आज भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली है जहां पर जो शिक्षा होता है उस शिक्षा में म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। यू हैव टू बी ट्रेन्ड इन म्यूजिक। बट उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, दैट प्लेटो वाज आल्सो ट्रेन्ड इन मैथमेटिक्स। तो आप बोलेंगे मैथमेटिक्स में कमजोर होंगे, इसलिए सोशल साइंस में उन्होंने अपनी सारी फिलॉसफी दे दी, बिकॉज मैथमेटिक्स में तो कभी हमने पढ़ा नहीं, पाइथागोरस पढ़ा है ना, या फिर यूक्लिड, इनका रेफरेंस मिलता है हमें मैथमेटिक्स में, not Plato. We never see the reference of Plato in his ideas. But Plato is trained into these particular disciplines. ये विधा हैं अलग अलग, और इन सभी विधाओं में प्लेटो को ट्रेन किया जाता है। Very discrete learning he basically has. See, Plato is not only a philosopher of just a thinker mold. Plato has fought 3 wars and he was rewarded for his bravery. तो प्लेटो क्या है, अपने जीवन में उन्होंने सब कुछ देखा है, और इसलिए उनकी जो थिंकिंग आएंगी उसमें ये सब कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट हो जाते हैं। सो ही फॉट 3 वॉर्स एंड वॉज इवन रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। ब्रेवरी अवार्ड्स सुनते ना आप, देखते भी होंगे, तो प्लेटो भी उस मोल्ड में है। सो विच मीन्स ही इज अ वेरी ब्रेव मैन, है ना। इट्स नॉट समबडी हु इज ओनली अ फिलोसोफर जो अंधेरे घर में बैठ के टेबल लैम्प जला के केवल पढ़ाई करते हैं और काफी दुबले पतले से फ्रेल हैं, लेकिन दिमाग बहुत है, इतने लंबे लंबे बाल रखे हैं उन्होंने, लंबी लंबी दाढ़ी रखी है ताकि आपको लगे कि बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति है। नहीं, अपने रियल लाइफ में भी प्लेटो इज मैन हु इज somebody who is very charming, who is very who is a great actor in the sense he participates in plays which are held at that time in Greece, Athens. He participates in war. War was quite usual at that time because the whole Greek civilization was divided into city states. तो फिल्में देखते होंगे आप, तो ग्रीक में एथेंस और स्पार्टा की काफी लड़ाइयां हैं, है ना। तो स्पार्टा मोर लाइक अ वेरी मिलिट्री स्टेट, वेरी पावरफुल स्टेट। एथेंस जो काफी फिलोसफर्स प्रोड्यूस कर रहा है, आइडियाज प्रोड्यूस कर रहा है। स्पार्टा आइडियाज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो केवल ब्रेव मैन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो बार बार इनको पटखनी देता है लड़ाइयां जब होती है तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो लड़ाइयों में पार्टिसिपेट भी उन्होंने किया when it was his time to serve, and he is also won awards for his bravery. इनके जीवन का जो सबसे बड़ा क्षण आता है वो है when he meets Socrates. Socrates is guru, okay? And what is the age of Plato? रॉयल फैमिली है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, पढ़ाई लिखाई की कोई दिक्कत नहीं है, ही इज बीइंग ट्रेन्ड, ही इज बीइंग रेज्ड वेल, उनको हर चीज की सुख सुविधा है। बट at the age of 20 he comes in contact with Socrates. Now this is his life changing event. Socrates, he's basically his guru, and Plato meets him when he was 20 years of age.
20 साल की अवस्था में प्लेटो किससे मिलते हैं? सोक्रेटिस से मिलते हैं। और इफ आई जस्ट गिव यू द नेम, द ईयर, इट इज 407 BC। तो 27 में ही इज बॉर्न, तो 20 साल के हुए। 427 BC ही इज बेसिकली कम्स इन कॉन्टैक्ट, और उस वक्त से meets him when he was 20 years of age and comes under his influence. So if you read many of the texts of Western political philosophy, they will also discuss Socrates as well, because our syllabus does not permit us, so we're not going into that trajectory. But yes, what he learned from him, how did Socrates influence him, we'll try to have a brief discussion on that for sure. Then this is Plato, and Plato is now somebody who is heavily influenced by him, but there is a great life changing moment, और ये मोमेंट केवल 8 साल में आती है प्लेटो के लाइफ में। 399 BC, Socrates is executed, and this is a turning point in Plato's life, and he leaves Athens. He's so jolted because his guru, he's basically given this trial in Athens. Trial होता है उनका because of his views, and ultimately he is given death punishment, he is executed. तो अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में आपके किसी गुरु को एक पब्लिक ट्रायल हो, यानी राज्य में ट्रायल हो, और फिर उनको राज्य दोषी पाए उस ट्रायल में और उनको मृत्युदंड दे, तो इफ यू आर अ फिलोसोफर, इफ यू आर अ थिंकर, and you are influenced by somebody whom you consider as your influence and guru, would not be a case enough that would seem to be a turning point of your life? Which means from that very day, Plato is a changed man. Plato becomes a philosopher because of this incident of execution of his guru. And from that moment, Plato is constantly searching the question that how he is able to give a good life to peoples of Athens, so that through his writings he is able to demonstrate to the Athenians that, see, you guys are fool, what you are doing is not going to give you a good life. And first he would try to find out the problems that prevails in Athens, and he would actually give you a rectificationary process, a process of rectification to overcome the problems that was plaguing the Athenian society of those times. So that is a very, very important piece of event that happens to Plato's lives. Okay. Now Plato returns in 386 BC. इसलिए आप देखिए, मैंने जो सबसे पहला जो किताब का रेफरेंस दिया है, उसकी एज मैंने क्या बताई है? डू यू रिमेंबर? I said 380 to 370 BC. So basically all of these works are written once Plato comes back to Athens. Okay? And जब प्लेटो एथेंस आए तो अब क्या करना है? पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्या करेगा? तो उनके कुछ मित्रों ने कहा कि हम आपको एक छोटा सा स्पेस देते हैं, आप वहां पे कुछ कर लीजिए, क्योंकि तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लोगों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, कुछ समझाएगा। तो people actually gave him a recreational spot which was named after a local hero जिनका नाम था Academus. क्या नाम था? Academus. So this is when he returns, what he is gifted, he is given a recreational spot named after a local hero, and his name was Academus. इसीलिए प्लेटो ने जो स्टैब्लिश की, दैट वाज कॉल्ड एकाडेमिया. ओके, जो एकेडमी प्लेटो ने स्टैब्लिश की, दैट्स द नेम, दैट दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम. एकेडमी जो प्लेटो ने स्टैब्लिश की, वेयर ही यूज्ड टू ट्रेन हिज स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट. He is gifted this place upon his return to Athens by some of his friends. Okay, and
दिस इज बेसिकली द प्लेस, दिस इज वेयर, आपको बस यही याद रखना है, वेयर प्लेटो established his academy. प्लेटो ने जो यहां स्टैब्लिश की अपनी एकेडमी, उसका नाम ही था एकेडमी। कहां स्टैब्लिश की? ये वही जगह है जो एकेडमस के नाम से जानी जाती थी, एंड प्लेटो ने अपनी एकेडमी यहां पर स्टैब्लिश की। और इफ आई शुड से, एंड आई एम नॉट overtly praising him, for another 100 years this was the place of the higher learning, the higher intellectual learning in ancient Greece. लगभग 100 वर्षों तक ये वो जगह है जो ग्रीस में हायर लर्निंग का केंद्र बनता है, which becomes the center of the intellectual learning in the Athenian city states of Greece. That's very, very prominent. Okay. Now, when this academy is basically, he's built it, and when Plato starts writing, IR में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस आता है किताब का, उसका नाम है पेलोपोनेशियन वॉर, है ना? Who writes about this? Thucydides. ये एक व्यक्ति हैं, अनदर ग्रीक। तो ग्रीक में ना बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने हमें हर तरह के लिटरेचर दिए हैं पढ़ने को, जो हम बार बार रेफर करते रहेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हो रही है कि एथेंस हार के कगार पर है, एक लड़ाई हो रही है स्पार्टा और एथेंस की, एंड एथेंस इज एट द वर्ज ऑफ डिफीट इन द पेलोपोनेशियन वॉर, एंड प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ब्लेम्स डेमोक्रेसी फॉर द डिफीट ऑफ एथेंस। ये एक बहुत बड़ी घटना है उस वक्त की, कि जब प्लेटो लिखना शुरू करते हैं तो पेलोपोनेशियन वॉर में ग्रीस इज एट द वर्ज ऑफ डिफीट। नाउ थिंक अबाउट इट, and Plato says that why the Greeks are failing in this war. He says the problem lies with the democracy in Athens. अब डेमोक्रेसी से घृणा क्यों है? क्योंकि उनके गुरु को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब प्लेटो जितनी भी प्रॉब्लम्स एथेंस की हो रही है, एंड आई शुड से मिस्टेक किया उन्होंने, बट ही सेज दैट ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच प्रिवेल्स इन ग्रीस. टुडे वी से दैट डेमोक्रेसी इज लाइक द बेस्ट कंसीवेबल सिस्टम दैट वी हैव मेड, because we have seen other systems are actually worse than democracy. So I am not somebody who is telling you that democracy is the best system. मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा था डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, बट बाकी जितनी व्यवस्था है वो डेमोक्रेसी से ज्यादा खराब है। चर्चिल ने कहा था that other systems are worse than democracy. That is why we are all being ruled under the democracy and the principles of democracy. That's one understanding. लेकिन प्लेटो क्या करते हैं, वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटाइज कर देते हैं डेमोक्रेसी को कि जो कुछ भी एथेंस में उस वक्त घट रहा है उन सभी का दोष, जहां पर एथेंस की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर एथेंस युद्ध में हार रहा है तो व्हाई इज एथेंस बीइंग डिफीटेड? ही सेज डेमोक्रेसी। एक सही जगह पर सही लोग नहीं है। ओके, एंड दिस इज द टाइम व्हेन स्पार्टा विंस द वॉर, ही स्टार्ट्स सर्चिंग फॉर द कॉज ऑफ द डिफीट. So he writes, his writings emerge from that particular context. And what he actually concludes is very interesting. It is only democracy which has led to the defeat of the Athenians in the hands of the Spartans. That's why the Athenians have been defeated. Okay? But what is the major reason? वो बड़ा interesting है। तो जब वो लिखना शुरू करते, अब आ गए हैं, एकेडमी स्टैब्लिश कर ली, अब तो उनको लिखना है, तो अब हम पहुंचेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। What he writes is very interesting, जो मैं अभी कह रहा था। So what is the context of his writing? He is writing at a times when there is a Peloponnesian war and Athens is on the verge of defeat. He starts writing. And what he concludes when the Spartans have won is very interesting. He says democracy as the reason for defeat of Athens by Sparta. पर अब ये सवाल आप पूछ सकते हैं ना कि तो डेमोक्रेसी से कैसे हार हो गई एथेंस की? क्योंकि ये मानते थे कि डेमोक्रेसी हैज अ वेरी करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द रूलिंग क्लास. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ रूलिंग क्लास ऑफ एथेंस and if there is a very strong corrupting influence that emerge from
the system that has made you the ruler, then he said that this is the cause of defeat. And what was the reason? He said, दो चीजें मुझे दिखाई पड़ती है रूलिंग क्लास में जिसकी वजह से हमारी हार हुई है. एक सबसे पहली चीज है कि हमारी जो रूलिंग क्लास है दे आर इग्नोरेंट, है ना. हाउ? अगर मैं ये सवाल लिखूं तो पहला आंसर वो देते हैं कि जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास, यहां पर लिखते हैं, मैं करप्टिंग इन्फ्लुएंस लिख देता हूं. हाउ करप्टिंग इन्फ्लुएंस? तो उसको मैं एक्सप्लेन नीचे कर रहा हूं. जस्ट सिंपल पॉइंट, रूलिंग क्लास इज इग्नोरेंट. यानी अगर आपके देश का राजा इग्नोरेंट है तो प्लेटो को वो पसंद नहीं है. अंधेर नगरी चौपट राजा, तो नगरी अंधेर हो जाएगी. हमारे यहां तो उल्टा है कि अगर नगरी अंधेर है तो आपको चौपट राजा मिलेगा. वो उसको रिवर्स कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर आपको चौपट राजा मिल गया है तो नगरी तो अंधेर हो ही जाएगी. तो एथेंस में टिमटिमा रही है रोशनी. क्यों? क्योंकि आपका राजा इग्नोरेंट है. बेवकूफ को आपने राजा बना दिया. रूलिंग क्लास इज इग्नोरेंट. और वहां पे डेमोक्रेसी है तो रूलिंग क्लास का मतलब राजा अपने आप से नहीं है. देयर आर पीपल हु आर बिकमिंग रूलर एंड दे आर बीइंग रूल्ड इन टर्न. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उस वक्त एथेंस में. एथेंस हैज गॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर पीपल हु आर सिटीजन they are taking their decisions in a collective manner. And who will become the ruler? It is a turn, out of turn. एक बार आप बने, अगले सभा में कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो सभा को प्रिसाइड करेगा. He is the ruler. So they have a very unique concept of a direct democracy because it was city state. छोटा सा राज्य का नगर राज्य जिसको कह सकते हैं. अभी बड़े बड़े states नहीं बने. So all these city states has very fewer population who were identified as citizens. एक और प्रॉब्लम, सिटीजन्स कौन होंगे? ओनली फ्री बॉर्न मेल, विच मीन्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फीमेल्स वर नॉट कंसिडर्ड टू बी सिटीजन्स. क्यों? इसका अच्छा रीजन कहां मिलेगा? एरिस्टोटल में. हाउ डेयर ही थिंक दैट वी कांट हैव सिटीजनशिप राइट्स. यानी हम क्या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? हमारे पास दिमाग नहीं है? एरिस्टोटल को बताएंगे. बट टेकिंग अंडरस्टैंडिंग एरिस्टोटल फ्रॉम दोस कॉन्टेक्स्ट, so you will be very critical of it. दूसरा, एरिस्टोटल will justify slavery. अब आज के समय में तुम स्लेवरी को जस्टिफाई करो, कोई बैठने नहीं देगा, और आप उस फिलोसफर को पढ़ रहे हो. बट अगेन लुक एट द कॉन्टेक्स्ट. तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि जस्टिफिकेशन है क्या. और हम जिस तरह से स्लेव को समझते हैं, क्या एरिस्टोटल भी स्लेव का मतलब वही समझते थे? जैसे हमने स्लेव का, आपने क्या समझ लिया? एक व्यक्ति को आपने पकड़ लिया जो मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा है, और उसको आपने बैल की तरह खेत में जोत में लगा दिया. उसको दिन भर सीकड़ में बांध के आप रखते हैं, उसको आधा पेट खाना खिलाते हैं, 24 घंटे में 23.5 घंटे उससे काम लेते हैं. आपके मन में तो यही फिगर बन गई. बट दैट इज नॉट व्हाट एरिस्टोटल वुड से. तो इसलिए कॉन्टेक्चुअली जब पढ़ लेंगे, इवन लिटरली जब पढ़ लेंगे, तो आपको अपने आप थोड़ी सहानुभूति हो जाएगी, नहीं ठीक कह रहा है, कुछ तो बात में दम है, ऐसे बेवकूफ टाइप से तो बात नहीं कर रहा. तभी तो आप पढ़ रहे हैं उनको. बट देयर आर पॉइंट्स ऑन विच, लुकिंग एट द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, it becomes very difficult for us to appreciate their ideas. But very surprisingly, I should tell you, who is the first feminist of the world? हाँ, एरिस्टोटल तो महिलाओं के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो कह रहा है नहीं, सिटीजन नहीं होनी चाहिए महिला. द वेरी फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिमार्केबल अचीवमेंट, प्लेटो. यानी अपने गुरु की बात को उल्टा कर रहा है ये. प्लेटो ऐसे व्यक्ति हैं इन दी एंशिएंट ट्रेडिशन, जिस वक्त अभी इक्वालिटी और फेमिनिज्म ये तो बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना. एरिस्टोटल उस वक्त कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है मेल और फीमेल में. हाँ सॉरी, प्लेटो. एंड प्लेटो इज लाइक अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फेमिनिस्ट फॉर अस बिकॉज ऑफ दैट. तो कभी कभी सवाल सीधे तौर पे इससे आपसे पूछ दिया जाए, यानी आपने सब कुछ पढ़ लिया और वहां आपसे सवाल पूछा जाएगा प्लेटो के फेमिनिज्म पे, तो आपको उस वक्त घबराना नहीं है. इमरान खान भी कहते ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है. So घबराना नहीं है, because Plato is the number one feminist in the ancient tradition. His ideas actually treat males and females equally. तो जब वो स्टेट बनाएंगे तो उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, ताकि आपको उस वक्त ऐसा ना लगे कि फेमिनिज्म को आप एकदम से मॉडर्न माने. प्लेटो जैसा व्यक्ति है जो बिल्कुल फेमिनिस्ट है, अपने अपील में, अपने आइडियाज में और उस आइडियाज के एप्लीकेशन में. while his disciple is complete opposite of Plato. वो फेमिनिस्ट नहीं है, वो कहता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा.
फ्री बॉर्न मेल ही सिटीजन्स होंगे। तो फ्री बॉर्न मेल्स का मतलब क्या, अगर मैं ग्रीक का नागरिक हूं और मैंने विवाह कर लिया स्पार्टा की महिला से, तो मेरा पुत्र जो होगा, क्योंकि मेल ही बन सकते हैं, वो फ्री बॉर्न मेल नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज इट इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर, बिकॉज यू हैव मैरिड अ फॉरेनर, ही विल नॉट बी सिटीजन, ऑल्दो मेल ही विल नॉट बी सिटीजन। लड़ाइयां बहुत होंगी, देयर विल बी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POWs, they will not be considered as citizens. Females will not be considered as citizens. Slaves will never be considered as citizens, क्योंकि उनके पास तो दिमाग ही नहीं है जो डिसीजन ले सके, तभी तो वो स्लेव्स हैं। सो अगेन सिटी स्टेट्स में खुद की आबादी कम, और उसमें यू हैव लिमिटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ direct democracy. So the context I wanted to explain, that why was it that we call the Athenian practices as direct democracy, example of direct democracy? That was the reason, because it was city state. So the overall population was very minuscule, and within that population also a very tiny fragment of population were identified and given citizenship rights. So citizenship was a very, very prominent duty. Citizenship not only about rights, it was some kind of a duty, very duty bound, कि आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। अपने आप में बड़ा ग्लोइंग आइडिया है। अब जब इतने बड़े बड़े देश हमने बना लिए, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो लागू नहीं हो सकता, इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव मॉडल बना दिया। डेमोक्रेसी में थियरीज में ये और स्पष्ट होंगी आपको, बट दैट इज व्हाट एंशिएंट सिटी स्टेट गिव अस। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव टू मेंशन हियर इज कि उन्होंने एक तो माना कि रूलिंग क्लास वर इग्नोरेंट, मैंने दो रीजन कहा था ना, और दूसरा रीजन कहा उन्होंने कि रूलिंग क्लास आर इनकॉम्पिटेंट, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके लिए सबसे जरूरी यह बात है दैट रूलिंग क्लास शुड बी अ मैन और अ वुमेन ऑफ विजडम। ज्ञान की जरूरत है। अगर ज्ञान को आपने काले बादलों से ढक दिया है, तो फिर उस राज्य के सर्वनाश होने से उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। आपने सीरियल्स देखे होंगे, काफी उसके रील्स में काफी वो आता है चाणक्य का, कि मैं पाटलिपुत्र में ज्ञान का सूरज देखने आया था, लेकिन यहाँ के सूरज को तो ग्रहण लग गया है, मैं जा रहा हूं घनानंद, और ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, व्हिच मींस इन द एंशिएंट फिलॉसफी देयर हैज ऑलवेज बीन सो मच ऑफ फोकस ऑन नॉलेज। हमें लगता है कि आज वी हैव क्रिएटेड द नॉलेज सोसाइटी, नो, the ancient knowledge and the ancient wisdom, they were so, I would say, upgraded version of knowledge and wisdom that they have created timeless knowledge. If हम कौटिल्य पढ़ेंगे तो you'll be amazed to know the kind of knowledge and the structure of knowledge that Kautilya would create. Similarly, if you go to China, people like Sun Tzu and others, look at the body of knowledge that these people have created. So every tradition around the world, they have so many wise people. Nalanda used to be the seat of foreign university. पूरी दुनिया से छात्र यहाँ परीक्षा देकर आते थे और एडमिशन मिलता था। So if you are a developed civilization, the best demonstration of that development was knowledge. How much knowledge you are producing? जैसे ही आप नॉलेज प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, आप वैसे ही उस स्टेज से दूर होना शुरू होते हैं। जब वेस्ट ने नॉलेज प्रोडक्शन शुरू कर दिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, तो लुक एट द वेस्ट नाउ, they have become the most prominent civilization, most developed civilization. हमने बंद कर दिया। So that is, I would say, it's a cyclical process. एक बार फिर से अभी लोग कह रहे हैं ना कि अगला सेंचुरी एशिया का होगा, China and India, oldest civilization, and they are going to have so much of impact as far as the knowledge tradition of the world is concerned. But that's a very significant part. So this fellow, he is focusing so much on these ideas कि wisdom नहीं है और उसको राजा बना दिया। दूसरा, क्योंकि विजडम नहीं है तो वो इनकॉम्पिटेंट है, एंड बिकॉज दीज टू थिंग्स आर देयर, देयरफॉर दिस हैज लेड टू द डिफीट ऑफ द एथेनियंस इन द हैंड्स ऑफ द स्पार्टा। ठीक है। द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एकेडमी, जो मैं अभी कह रहा था, एकेडमी ऑल्सो अलाउड वुमेन टू एंटर। सो एरिस्टोटल ने जो एकेडमी बनाया, वुमेन टू एंटर, या ऑल्सो एडमिटेड वुमेन, ये ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा लग रहा है कि मैं एक चार दीवारी में मैंने लिख दिया कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड, बट दे एडमिटेड वुमेन।
इससे मतलब जो मैं कहना चाह रहा था कि Aristotle is someone who actually favors a model which does not deal with the idea of inequality. उनके लिए there was complete equality that prevailed between man and woman. Yes, what I have written Plato, so at least you should have that much of brain to understand that we are doing Plato right now. So even if I say the wrong thing, भगवान ने एक अच्छा खासा दिमाग दिया है आपको, समटाइम्स थोड़ा उसका इस्तेमाल भी कीजिए. प्लेटो भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं. ठीक है. So they admitted women. Then there are 2-3 very important things which are taught in the academy: mathematics, astronomy. So look at the range: astronomy, music, advanced geometry, है ना, जिम्नास्टिक, ये सब चीजें भी सिखा देते हैं, etc. So what we see here is that Plato, law is very important. Law, philosophy, क्योंकि philosophy भी तो बहुत important है, ये सारी चीजें एकेडमी में पढ़ाई गई. That Plato has established. So he said that one has to know all this thing as far as the knowledge is concerned. मैथमेटिक्स पे तो इतना ज्यादा फोकस था, और मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है. आप देखिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाती है. इसलिए वहां की गेट पर लिखा होता था, और वो ग्रीक भाषा में लिखा होता था, तो मैं वो बोलूंगा नहीं क्योंकि बोलना बड़ा मुश्किल होगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड, टंग ट्विस्टर होगा. बट उन्होंने गेट पर एक बड़े लंबे अक्षर में लिखवाया हुआ था, लेट नो वन विदाउट द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर. सो इट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर प्लेटो. So on the gates of academy, this was the inscribed words in Greek, which meant that let no one without the knowledge of geometry enter here. So knowledge of mathematics, geometry was so important. And you will see that most of the things that developed in geometry, they developed by the Greek, people. So Greek is a place which is a seat of knowledge of those times. And Plato is basically part of that very competent tradition. Okay? So what is प्लेटो लुकिंग एट एकेडमी? प्लेटो जब एकेडमी बना रहे हैं तो कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, पर्पस रहा होगा. तो अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेटोज एकेडमी, व्हाई वुड प्लेटो क्रिएट एन एकेडमी? प्लेटो वापस आते हैं और आते ही लिखना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ का कारण डेमोक्रेसी है. लुक एट द कॉन्टेक्स्ट. सो ही इज फोकसिंग हिज एनर्जी ऑन एकेडमी. व्हाई? What is the purpose? Any guess? हाँ, बताइए. So he wanted to train the future philosopher rulers. इसलिए philosopher king, लेकिन मैंने शब्द क्या लिखा? philosopher ruler. क्योंकि जैसे मैं king बोलूंगा तो महिलाएं बोलेंगी कि जब प्लेटो महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा देते हैं तो आपने किंग क्यों कहा? व्हाई नॉट क्वीन? क्योंकि किंग का मतलब इट्स अ मैस्कुलिन वर्ड. राजा, रानी इज क्वीन. तो इसलिए हम जेंडर न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल करेंगे. विल यूज, इसमें कोई पुरुष महिला का भेद नहीं है. फिलॉसफर रूलर. सो प्लेटो इज समबडी हु वांट्स यू टू बी अ फिलॉसफर फर्स्ट. Philosopher is a man of wisdom. He is trained into these diverse field of knowledge. Once you have acquired that knowledge, only then Plato considered you are competent enough to rule. Because Plato's ideas main bedrock lies in the concept of philosopher ruler. वो हम पढ़ेंगे in Plato's ideas, but ये Plato का सबसे major idea है. And Plato has written extensively that how he is going to train his philosopher ruler. And for that, academy becomes the training ground. So if Plato is establishing academy, one of the major purpose of establishing academy is to create future philosopher rulers for the city of Athens. ताकि एथेंस में ये जो इग्नोरेंस के काले बादल मंडरा रहे थे,
वो उनको दूर कर सके और एक विजडम वाइज रूलर दे पाए एथेंस को, जो एथेंस को फिर से एक गुड लाइफ की तरफ ले जा सके. That's his purpose, his ultimate purpose, and that is what he was doing in terms of creating these institution. Okay, so why we say that प्लेटो के लाइफ का जो सेकेंड मेजर टर्निंग पॉइंट है वो यही है, द बिल्डिंग ऑफ द एकेडमी. सो पहला टर्निंग पॉइंट है व्हेन Socrates is executed, and the second turning point because Plato devotes his entire life now in his academy and the works of the academy. So this is the second major turning point in Plato and his writings. Okay, so that's why people said कि Plato का institution क्या था? It was going to be for next 100 years in Athens as the seat of higher intellectual learning. So Plato and the institution of the academy actually forayed into, वो original scientific research में भी काफी काम करने लगे वो, because they were creating people and they were training people in such a manner that all these people were now exposed to different streams of knowledge and thought. And Plato said that this is the best way in which I am going to train my philosopher ruler. Now he knows that nobody is going to just ensure that a philosopher is made a ruler of the country, but he's a philosopher. He will only write his ideas in his book, what he wants. So we can say from his life and his brief life sketch that this became the learning ground for the idea of a philosopher ruler to be fructified. यानी एक philosopher ruler बोलना एक बात है, लेकिन हम उस philosopher ruler को कैसे बनाएं, तो उन्होंने उसके लिए एक बड़ी अच्छी स्कीम लिखी, पर वो तो थियरी था ना. उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने जो एकेडमी बनाई थी, वो माना जाता है कि प्लेटो का वो एक एकेडमी वाज अ नेचुरल आउटकम ऑफ हिज डिजायर टू इंश्योर दैट ही इज एबल टू ट्रेन द फिलॉसफर रूलर ऑफ हिज आइडियल स्टेट. सो एक आइडियल स्टेट तब आएगा किसी भी राज्य में जब आपका रूलर जो होगा ही वुड बी अ फिलॉसफर. नाउ इफ यू आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, you will think that this idea is so much ingrained with problems. It's a very elitist idea. पढ़ा लिखा और एकदम से philosophy जानने वाला ही व्यक्ति रूलर हो जरूरी है क्या, है ना? Look at the state of Bihar. We have many people who were not very well read who became the chief ministers, and see the position the state is in. So why we could achieve that sort of a position? So if you relate to Platonian idea, we would say कि बात में दम है. अगर सक्षम व्यक्ति आपका शासक नहीं है तो स्टेट कैन फेस हार्डशिप्स. सो प्लेटो इज रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम्स दैट एथेंस इज फेसिंग, नो डाउट, बट प्लेटो इज ट्राइंग टू create his most significant idea that how does he create a philosopher ruler, because Plato is a philosopher, so he thinks that only a knowledgeable person is the best bet for a good rule. अगर आपने रूलर को नॉलेज नहीं दिया और उसको रूल दे दिया तो व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रीड इनकॉम्पिटेंसी एंड इग्नोरेंस, एंड दैट विल ऑलवेज बी अ मिस रूल एंड नॉट अ गुड रूल. And if it is a misrule, that is not going to lead to good life for people who are inhabiting the state. So this is primarily one area where we have to learn this idea of Plato. But Plato ने कोशिश की पर फेल हो गए to establish a philosopher ruler, है ना. खास तौर पे उन्होंने सिसिली एक जगह इटली में, he wanted to introduce his idea over there, but it was a very failed attempt to come up with these ideas of a philosopher ruler. So what does Plato do in his life? He spent most part of his life, at least till the end of his life, in teaching in the academy, है ना, instruction दे रहे हैं. And somewhere around 347, Plato is no more. So basically ये बनाया उन्होंने, engages into teaching, instructing, learning, and he died in 347 BC. So what we learn from Plato's major writings is, और प्लेटो का देहांत भी बड़े अजीबोगरीब समय में हुआ. प्लेटो बेसिकली अपने एक विद्यार्थी के वेडिंग में गए, है ना. इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स के वेडिंग में नहीं जाना चाहिए, इट्स अ बैड ओमेन, बट शायद अपशगुन हो गया तो हो गया. तो वेडिंग में आमतौर पे फीस्ट होती है, इंडिया में भी फीस्ट होती है, थोड़ा
बढ़ चढ़ के होती है और विदेशों में भी होता है। हालांकि मैंने बहुत जगह देखा है कि वेडिंग में एकदम बड़ा नॉर्मल फीस्ट, मतलब जितने पैसे में आप अपना बर्थडे मनाते हैं उतने पैसे में वेडिंग हो गई। होल आइडिया इमर्जेस। सो प्लेटो हैज गॉन ओल्ड मैन नाउ, सो ही गोज टू अ स्टूडेंट्स वेडिंग पार्टी और अटेंड कर रहे थे और वहीं पे फीस्ट के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड जब उनकी मृत्यु होती है तो लोगों को पता चलता है कि प्लेटो कितना महान व्यक्ति था। जब तक लोग जिंदा होते हैं तो आमतौर पे वो महान नहीं होता, एक बार वो मर जाए उसके बाद, है ना, बहुत महान थे। जो व्यक्ति उनके प्रतिद्वंदी भी हैं वो भी कहेंगे कि बहुत महान व्यक्ति थे। तो जब तक जिंदा है तब तक टीवी पे देखिए 8 बजे 9 बजे के समय में एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम भाव से लोग बात करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपको ना हो तो ब्लड प्रेशर आपको हो जाएगा। And that happens, and finally when the whole Athens comes to know that Plato is no more, whole Athens comes up to pay their last respect, and people now start talking that Athens today has lost its most learned and most distinguished child. That was his life, and that's what we can understand as the Platonian life. Plato ने काफी dialogues भी लिखे हैं, there were many dialogues that he has written. लोग कहते हैं कि there were like 11 genuine dialogues and 22 genuine dialogues, sorry, and 11 were disguised dialogue. So which means all in all there were 33 dialogues that he has written. Dialogue is a very important part of method. इस पर हमें थोड़ा फोकस भी करना होगा जब हम प्लेटो को पढ़ रहे होंगे. He has also written letters. Roughly 13 letters was written by Aristotle. We have already seen his major work, the Statesman, the Laws, and the Republic. That remains by far one of the best written literary work, philosophical work by a major philosopher. And रिपब्लिक का जो मतलब है आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिपब्लिक का मतलब, दरअसल हम जो रिपब्लिक को समझ रहे हैं, ग्रीक भाषा में रिपब्लिक का मतलब वो होता नहीं है, और इसी से आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। रिपब्लिक का मतलब ग्रीक भाषा में होता है जस्टिस। So when Plato is writing Republic, that is not about a republican form of government he is writing. He is actually focusing on the idea of justice. Okay. So what he writes as Republic, and in Greek it means justice. Okay. And Latin sense में इसको polity के तौर पे हम समझते हैं, लेकिन वो sense आपको नहीं लगाना है अभी। तो Latin में इसकी जो meaning है that is not important for you. Greek में जो Republic की meaning है that is justice, that you should remember. Republic in Greek means justice. Okay, that's why his major idea of underscoring his point that we see or refer in Plato is about justice. Okay, one of the major method जिस पर हम फिर से चर्चा करेंगे, but what method does he employ? एक dialogue method होता है, यानी what is the method of his writing या methodology. So we find in Plato that Plato, जैसे आपने हिंद स्वराज पढ़ा है महात्मा गांधी, if you look at महात्मा गांधी's हिंद स्वराज, बड़ी पतली सी किताब है, 1 घंटे में आप पढ़ सकते हैं, और एकमात्र वही किताब है जो गांधी ने ओरिजिनली लिखा है। ठीक है, वो ऐसी किताब है, यानी गांधी के पॉलिटिकल थॉट की वो ओरिजिनल किताब वही है। बाकी कोई किताब गांधी ने अपने पॉलिटिकल थॉट के लिए नहीं लिखा है, उसके बाद तो ऑटोबायोग्राफी है, बट जो पॉलिटिकल थॉट के लिए गांधी ने लिखा है, जहां पर आप गांधीयन पॉलिटिकल थॉट समझ सकते हैं, दैट इज हिंद स्वराज। ओनली वन बुक, दैट इज हिंद स्वराज। कैसे लिखा? डायलॉग। सो somebody is asking a question and Gandhi is replying. What is written in the book? Reader, editor. So somebody who is reading, he is asking question, and the editor is basically giving answers to those questions. That is called more like a dialogue method. So this dialogue method is something that emerges in the writings of Plato. And why this is very important? Because dialogue is such method which is very important in establishing truth. So I'll explain you what do I mean by this. And this is the method that Plato used prominently in his entire writings, because it is a very, very important methodology जिसको हम कहते हैं dialectical method,
And this dialectical method was developed by Socrates. Okay. So we will have a discussion on dialectical method as well, but you can understand that this is an approach which we find in the writings of Socrates. And Socrates is the guru of Plato. So what Plato learns from Socrates is this method through which you can establish truth. तो ग्रीक के समाज में उस वक्त ट्रूथ को जब ढूंढते थे लोग, तो उसमें डायलॉग की बहुत इंपॉर्टेंस थी. इसीलिए डिस्कशन एंड डिबेट, ओपिनियंस एंड काउंटर ओपिनियंस, it becomes one of the major route and means to understand truth in the Greek society of those time. Okay, and how you can do it? You can only do it when you have narratives, when you have one person whose opinion and then the other person who is having a dialogue with that counter opinion, and in that discussion process, you know, with opinions, counter opinions, they were reaching or trying to reach towards the truth. So I have not got the entirety of the knowledge. Neither have you got the entirety of the knowledge. We are part of a discussion and we are both searching for that truth. So which means that there cannot be very significant way other than dialogue through which the Greek society was trying to establish truth in those times. इसीलिए जो एकेडमी establish होती थी, वहां का सबसे important जो आइडिया होता था वो होता था जो डिबेट और डिस्कशन प्रमोट किया जाता था उन एकेडमीज में, where people would have debates and discussions, and those debates and discussions and dialogues between different people would be, you know, one of the ways through which people could be given very complex ideas in the most simplified manners. तो जब प्लेटो ने अपने डायलॉग्स लिखे तो उसमें one of the person who was answering those questions was Socrates. So people would have arguments with Socrates on one or the other issues, and Socrates would answer them all these questions. And this was the way in which Plato was approaching a particular truth, particular reality, a particular concept through which he was trying to establish before us the ideas that one were to understand. So that's why this is a very prominent discussion that we find in Republic. यानी पूरे रिपब्लिक में आप देखेंगे कि एक कमरे में बैठकर लोग संवाद कर रहे हैं उस किताब में, और उसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? सॉक्रेट्स. ठीक है. सो रिपब्लिक इज ऑल्सो यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी, दैट इज डायलॉग फॉर्म, दैट हाउ dialogue can be a very important method to establish truth. Okay, why? Because through dialogue you can have opinions and counter opinions. So dialectical method भी क्या आपको बताता है? That when you take this approach, what you establish, जैसे मार्क्स ने इसको बहुत अच्छे से यूज किया बाद में, but his concept is called dialectical materialism. Okay, so we'll try to understand these concepts as well when we refer to the ideas of Plato. कि प्लेटो ने इस पूरे मेथड को कैसे समझने की कोशिश की, because he is again inspired by the writings of Socrates. But dialogue method is very important. इसलिए पूरे ग्रीक फिलॉसफी में सबसे ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस किसी भी चीज को दिया है in order to uncover knowledge, वो डायलॉग था. Dialogue was very essential part of the Greek tradition. Okay, and what does Republic do to us? तो रिपब्लिक ने ये मेथडोलॉजी यूज की, which was the dialogue method, dialogical method भी इसको कहते हैं. And Republic wanted all of us to explore the concept of justice. That's what it means concerning justice. So Republic explores the concept of justice, and Republics try to help us that how individual as well as state can realize justice. So Republic tried to explore the concept of justice and how individual, यानी जस्टिस दो लेवल पर है, इंडिविजुअल एंड दूसरा लेवल क्या है? स्टेट, could realize justice. ये कैसे रियलाइज जस्टिस को ये दोनों कर सकते हैं, है ना? सो बेसिकली ये तब होगा when you will have a creation of a polity, social institution, different institutions, which can only be possible if human attain their
excellence and perfection. This is why we say that Plato establishes a very significant concept of an ideal state, क्योंकि एक ऐसी अवस्था है जब हर व्यक्ति ने अपना परफेक्शन अटेन कर लिया है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर काबिलियत है कि आप बहुत अच्छे कुशल प्रशासक बन सकते हैं, बट सोसाइटी ने क्या किया? सोसाइटी डज नॉट अलाउ यू टू बिकम अ एडमिनिस्ट्रेटर. Society forces you to work in the fields, grow vegetables, grow cereals. Now, if you are a Plato, Plato would see to you and say that this is injustice at the individual level. Why? Because the person has not been able to achieve his end, his goal. So, which means there is a concept that Plato wants you to learn, which is basically about the nature of man. And in Plato, we will understand this concept as nature of soul. तो प्लेटो बहुत अच्छे से डिस्टिंक्शन करते हैं. वो कहते हैं नेचर ऑफ सोल डिटरमिन करेगा कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे. सो एवरीबडी कैन नॉट बी फिट इनफ टू बिकम अ फिलोसोफर रूलर. और फिलोसोफर रूलर, you will, your nature of soul has to demonstrate the thirst for knowledge, because philosophy can only be understood if you are a person who is always interested for more and more knowledge. If you are courageous, your soul is courageous, you are fit enough, but fit enough for the purpose of protection, the work of protection. So soldier and other avenues where you can protect the state. And if your soul demonstrates strong appetite, then you would be from the producer class, जो खेतों में काम करेगा, जो ट्रेड करेगा, which will produce, because उनके पास appetite है. तो प्लेटो is saying कि जिस सोल का जो नेचर है, जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पे तब हो सकती है जब हम उस व्यक्ति को उसका वांछित स्थान दें. एंड बाय दिस कॉन्सेप्ट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू लिंक द आइडिया ऑफ द स्टेट. ही क्रिएट्स द आइडिया ऑफ द स्टेट. एंड देयरफॉर if you are ruled by a philosopher ruler, then you are able to do justice at the level of the state. Okay? So it's a very important concept where we have to approach this concept, and how the Platonian idea is basically a revulsion of the existing tradition in Athens. Because Athens में क्या हो रहा था? Athens was about participatory democracy. People were participating in the institutions. They were carrying on their administration by participation. And Plato is completely critical of these ideas, and he gives you a different logic and different means to create a state which would be solely attaining the perfection that is in the individual. तो अगर मान लीजिए कि आपका नेचर ऑफ सोल है that you are a philosopher, you have the ability to rule, but if you are in the producer class, that is injustice. If at the state level you are not able to give people their due positions as per the nature of the soul, this is injustice at the level of individual and at the level of society and state. Okay? So what we find in Plato is a very strong critique of the prevailing ideas of governance, of government and institutions that prevailed in the ancient city-state of Athens. And as a corollary, he gives you a very different idea through which he could create that perfect state with perfect justice that will inform individual as well as society as well as state. Okay? So write down 2-3 points and then we finish. Republic, next point में लिखिएगा इसको. और next point कैसे करना है? Just a small hyphen. Republic also disapproved the Athenian way of life, disapproved the Athenian way of life, and also its vibrant participatory democratic structure. And also its vibrant participatory democratic structures. He understood
he understood that democracy promotes फैक्शनलिज्म. फैक्शनलिज्म मतलब अलग अलग फैक्शंस हो जाते हैं. आप देखते हैं ना आज के समय भी डेमोक्रेसी के अंदर काफी फैक्शंस होते हैं, अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं जो हमारे अल्टीमेट गोल को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं. तो उन्होंने ऐसे समझा डेमोक्रेसी, पहले हम देख लिए इनकॉम्पिटेंसी और इग्नोरेंस तो होता ही है, प्लस ये वाला ऐड कर लीजिए, प्रोमोट्स फैक्शनलिज्म, 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 FACTIONALISM, फैक्शनलिज्म, कॉमा वायलेंस, वायलेंस, पार्टिजान पॉलिटिक्स, पार्टिजान पॉलिटिक्स, कॉमा इन पार्टिजान पॉलिटिक्स मतलब हम अपने अपने लोगों को फेवर करेंगे, है ना. वी आर नॉट वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज नॉट इन आवर माइंड. ही सेज डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट ऑफ फैक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दैट इज इन माइंड. So that always leads to problem. Then comma incompetent and ignorant ruler, incompetent and ignorant ruler which leads to political instability. इन्होंने एक और बात रिपब्लिक में लिखी कि डेमोक्रेसी में कभी भी बहुत विद्वान व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलता. क्यों लिखा है ऐसा? सोक्रेटिस की वजह से. कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, गिफ्टेड पर्सन, प्रजातंत्र में क्या करेंगे आप उसको? बड़ा होशियार है यार, इसको दूर रखो, ये हम सबकी जगह ले लेगा. होशियारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो प्लेटो के मन में ये कसक है, और रिपब्लिक में हमें अंडरटोन में ये समझ में आता है दैट प्लेटो इज ऑल्सो मेकिंग दिस पॉइंट दैट वेरी गिफ्टेड पीपल, दे are always reversed in democracy. Okay, he also blames democracy in Athens, for the death of Socrates. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, जो मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी बड़ी लिमिटेड है, मतलब आपके मन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम कैसी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द डेमोक्रेसी इन एथेंस was limited because slaves, aliens का मतलब जो मैंने समझाया, if you are born to a marriage with an alien partner, so slaves, aliens and women were not allowed to participate in the political process Next point, the Republic also focused on a very elaborate scheme of education, तो रिपब्लिक में एजुकेशन के ऊपर बहुत इलॉबरेटली लिखा गया. एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट famous philosopher who is a French, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau says that if I read Republic, I find that Republic is not a political treatise. यानी वो राजनीति के विषय पे लिखी हुई किताब नहीं है. It is more like a educational treatise. So what I want to tell you is that
the scheme of education was so beautifully and comprehensively sketched in Republic that many people, that to a philosopher like Rousseau, would tell you that instead of taking it as a political book, you should consider it as a book on education. Elaborate scheme of education which led Rousseau to comment that, R-O-U-S-S-E-A-U, R-O-U-S-S-E-A-U, है ना, J. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, to comment that it was hardly a political work. It was hardly a political work, but one of the finest treatise, T-R-E-A-T-I-S-E, treatise means work, finest treatise on, but one of the finest treatise on education ever written. We can say that even after more than 200 centuries, 2300 years, sorry, not centuries, even after more than 2300 years, Plato's Republic is unmatched because it introduces basic issues confronting humans as citizens in a state. Republic mainly focus on establishing the right kind of government and politics which should be legitimate only if it was based on rigorous scientific thinking. Okay. So I'll stop here. This is largely the introduction that we have on Plato, and then we'll carry the discussion forward. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.